आपको एक फैक्ट्री में रमेश लाइफ के लिए। अच्छा ओके वो कनेक्ट हो गया। तो एनी आइडिया पार्ट्स मैन्युफैक्चर कर रेस्टोरेंट हो टाइगर डॉक्टर साहब कोई आइडिया owner of a pharmaceutical company. So he's saying 1 billion. 1 करोड़ रुपए चाहिए. Although this is an antithesis I am giving to you, but this is the reality. Okay? तो please, फिर इससे बड़ा ही होना चाहिए. Then you will survive. ये essential skills हैं to be an entrepreneur. अगर ये skills 5 ये skill sets आप में नहीं या आप इनके ऊपर working नहीं कर रहे या develop नहीं कर रहे, do not consider yourself to be an entrepreneur. Try something else. Number 1, extraordinary selling skills. Step number 1, अगर आप अपना आइडिया ही आप किसी को बेच ना सकें, मेरा अपना आइडिया, मेरा अपना ब्रेन चाइल्ड, मैंने उसको पैदा किया, मैंने उसको बड़ा किया. If you are not able to sell your own idea to someone and you don't have the skill, आपका ये mindset नहीं है, you cannot face people. ठीक है? ये essential skill है. ये इसका selling means it's a complete एक process. It's not just कि आप door by door आप जाके knocking करके बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है. But you know, आपका idea पे buy करने होगा. If you do not have the selling skills, the commercial skills, please don't consider entrepreneurship. Either you start learning about it, it's a learnable skill. It's not by birth. You have to develop this. ठीक है? देखिए highest level पे selling कहाँ होती है? US गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट की जो डील होती हैं, अल्टीमेटली उसकी जो कन्विंसिंग होती है कौन करता है? Anyone? US president. On behalf of those countries, you know. Head of the states का modern day nation states में this is one of their job roles. They have to sell their country's product and services to the new markets, and this is what these guys have been doing. You know, they have been pivotal. This head of the states, whether it's U.S. president, it's a British prime minister, or the French president, they are the ones who make the biggest deals. They just go and sell on behalf of the companies which they represent. So selling skill, and you must be remembering, you know, Apple की launching में कौन आता था? Steve Jobs. He was a brand in himself. You know, Richard Branson की इमरान के ऑफिस में बड़ी सी एक पोर्ट्रेट लगी है. I'm sure आप में से बहुत कम लोग शायद रिचर्ड ब्रांसन को जानते होंगे. He is the founder of Virgin Group. You know, Virgin Atlantic, Virgin Aerospace, Virgin Space Tourism, Virgin Trains, Virgin Airways. Very interesting. He is one of the biggest brand in himself. He wasn't a model actually. He was not a showbiz guy. But for his company, he is the biggest brand himself. And he sells his ideas, his face for his company. Selling. Number 2, financial equivalence. Ultimately, भाई
आपका ख्वाब जितना बड़ा हो, आपका आइडिया कितना महान क्यों ना हो, जो कुछ भी है, अगर आपके सामने नंबर्स, इफ यू आर अनएबल टू थिंकिंग नंबर्स, कितना खर्चा, कितना प्रॉफिट, कितने पैसे चाहिए, कितने लगाऊंगा, कितने आएंगे, कब कब पैसे चाहिए, कितने, इफ यू आर नॉट अ नंबर्स गाय, अगेन थिंक ऑफ समथिंग एल्स. ये नंबर्स ही का टोटल गेम है. एंड फर्दर हम जब आगे चलेंगे यू सी वाई. पीपल स्किल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बीइंग एन एंटरप्रेन्योर मीन्स यू आर द लीडर ऑफ योर कंपनी, योर टीम. चाहे 2 लोग हो क्यों ना हो, 10 लोग क्यों ना हो, 100 लोग क्यों ना हो, 1000, आपने उनको लीडरशिप प्रोवाइड करनी. यू हैव टू प्रोवाइड देम सम सॉर्ट ऑफ अ विजन, सम सॉर्ट ऑफ अ मोटिवेशन, सम सॉर्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन, सम सॉर्ट ऑफ अ टास्क मैनेजमेंट. So you should have very good people skills. You should be accommodating people at every level. एक bottom level के employee या counterpart या किसी और जगह से vendor से लेके एक top level के manager से communicate करने की skill आप में होनी चाहिए. Very very important. The next one, economics. Please 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 please. ये ultimate problem है. If you do not understand economics, you are in trouble. You are leaving yourself at the mercy of chances. ठीक है? इस पे हम further आगे और भी डिस्कस करेंगे. I'm sure आप में से किसी के बैकग्राउंड में किसी ने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी. ऐसे ही anyone? ठीक है? It is so important, you know, if you do not understand this thing, you are leaving yourself at the mercy of chances कि मेरे साथ कल क्या होगा. मैं 5 लेन रोड भाग के क्रॉस करता हूँ, देखता हूँ दूसरी साइड पे ट्रैफिक से बगैर किसी से क्रैश किए हुए मैं पहुँचता हूँ कि नहीं पहुँचता. टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक शिफ्ट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेसमैन एंड एन एंटरप्रेन्योर? अ बिजनेसमैन इज नॉट एन एंटरप्रेन्योर, whereas an entrepreneur is a businessman. ठीक है? Why? Essential skill in a businessman is he is not necessarily required to innovate something new, whereas a businessman, an entrepreneur, he does. Limited होता है, limitless नहीं होता. Businessman एक limited area, एक limited market के अंदर काम करता है. मेरी मिठाई की दुकान है, अब मैं अपने आप को चलो केक्स बनाना शुरू कर दूँ. और मेरी मिठाई की दुकान थी, अब मैं कार मैन्युफैक्चरिंग यह मेरा काम है. एंटरप्रेन्योर रिचर्ड ब्रांसन, जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले मेंशन किया था, यू नो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज. लेट मी टेल यू समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट रिचर्ड ब्रांसन. रिचर्ड ब्रांसन स्टार्टेड एज अ म्यूजिक लेबल कंपनी. कैसेट्स और रिकॉर्ड करके एल्बम्स रिलीज करते थे बैक इन 70s. And do you know what he is doing right now? He is pioneer of space tourism. He did that 10 to 15 years before Elon Musk. Richard Branson. They broke the monopoly of British Airways on Europe to Australia route, US to UK routes, and British Airways की जहाँ जहाँ monopoly flights थी, Virgin Atlantic as an airline लेकिन diversified. तो entrepreneur की कोई लिमिट नहीं. ठीक है जी? Linked with one industry, linked with multiple industries. Businessman is a traditional thinker, whereas entrepreneur is innovative. Innovation is must. I've just realized few years back, when I did my MBA, when I did my studies, there was nothing in management sciences called innovation. And recently, I've just realized last year, we went to a company called Treat Group. You know Treat? They manufacture razors. It's a huge group, you know. And they have a dedicated department for innovation management. Now, that is not just innovation within the product. Razor में क्या innovation है भाई? You know, the whole innovation regarding the whole process.
the whole business, they are changing, and there is a dedicated department for that. And innovation management is one of the latest subjects being offered at the highest level in a very good university level. And hopefully in 2-3 months' time, I'm trying to gather some stuff and resources, and we'll be again talking about this innovation management. So this is a new thing, you know. So it's not just a task or something the I can do. It's now, again, it's a process, it's regarded as a subject now. Stick to old methods, adaptable, technology explorer है तब, provide jobs, but working for himself, provide opportunities. This is something very, very, very interesting and important. You know. आपके पास कभी भी being an entrepreneur, आपके पास कभी भी सारे resources को pull up करने की resources most of the time नहीं होती. So being an entrepreneur, it provides opportunities for other people. For example, a startup, you know. मैं, for example, अपनी example आपको मैं देता हूँ. We need so many things where we need support. We cannot hire people on the permanent basis, but we need support on so many different things. For example, where we need people for videography. We need people for digital marketing. We need people for designing and something more important. What about SolidWorks Manage? Implementation. You know, we have an enterprise level software solution for data management, for collaboration, for project management. It's a super duper tool. But we are a mechanical engineering company. We know very less about networks and data management systems. So I'm looking for someone who can partner with us for in the implementation part. So if we are able to sell that software to someone, so we need someone to get that thing in place. Someone with the data management and networking skills, you know. So I will give the training, I will provide the resources, we have the software, we will sell it and we will pay. But I need someone who has got more expertise to deliver and handle it in a better way than I can do. You know, so this is something called collaboration. So being an entrepreneur, you have to work with people, you have to develop people. You cannot always have, you have to share your profits, you have to share the resource pool with others. You know, ताकि आपकी जो दुनिया है वो आप expand कर सकें. Goal is to make money. लालची लोगों, goal is to make change. ठीक है? ये change है ना, ये बड़ा important है. इसके बगैर profit नहीं है. अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग, इस पे आई वुड लाइक एंड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप इस जर्नी को ऑन योर ओन, देयर सो मच स्टफ ऑन यूट्यूब एंड हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट टाटा ग्रुप? प्लीज रेज योर हैंड. You have studied about this? Good. And this is one of the world's oldest and successful business collaborator. अच्छा जी, इसमें मैं quickly इसकी important things में से जाऊँगा. It was established in 1868 as a Tata trading company. पर इनकी जो सबसे बड़ी जो achievement थी वो so far, that was in 1903. This was the first steel mill actually the mill word is missing, in Jamshedpur, Jharkhand. This is subcontinent's first steel mill built in, it started in actually in 1901 and started production sometime after 1903. And Jamshedji Tata, the then chairman of this company, he brought this steel mill production plant from where? Any guess? 1901, कहाँ जा सकता होगा? USA. Even initial feasibility reports, site selection and the sourcing of the material, he brought those guys there. The resource was not available within India. So initial survey and the mapping जो करनी थी for location and resources, he got guys from USA. 1901 यार जहाज नहीं था. Traveling from India to USA and
getting someone and convincing someone to come and do it in India. Where? Jharkhand, आपने नाम भी नहीं सुना होगा. This is northeast of India. Right now, this is the oldest and the most profitable steel functioning in India. You know. Then next to their credit highlight would be, अच्छा हाँ, इसमें this power company as well. They were also the first one to introduce hydropower in subcontinent, and he got inspiration from the Niagara Falls power plant units. They are the first one to build a 5-star hotel in India, in subcontinent. Which one? Taj. Taj. You know why it was considered the first 5-star hotel in subcontinent? What was the 5-star thing in that hotel? बड़े खूबसूरत एक्सट्रॉर्डिनरी पैलेसेस हुआ करते थे, नवाबों के, महाराजाओं के, उनके गेस्ट हाउसेस. But the extraordinary thing about this Taj Mahal was it has got two things which were not there in any of the grand locations. इसके पास बिजली थी. It was the first electric powered building in subcontinent, and it had elevators. Yeah? आज भी icon है. People, लोग उस पे एक रात जब ठहरते हैं कोई अपनी ओकेजन पे या कुछ उसमें, तो लाइफ लॉन्ग वो तारीखें भी आज तक वो अपनी याद रहते हैं. I stayed at Taj on फलाना date. You know, it's an icon now. अच्छा, so and so again एक बड़ी इंटरेस्टिंग थी, that is आपकी और हमारी फील्ड से काफ़ी करीब. Where is that? Tata Consultancy. Here, 1968. Tata Consultancy Services. क्या करती है Tata Consultancy? Any guesses? They are the one who introduced software development to India. और आज जो इंडिया का जो impact है at the global market, you know it very very well. You know more than I. कि इस टाइम पे इंडियन कितना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं दुनिया में सॉफ्टवेयर के उसमें. And here it was, Tata Consultancy Service. Couple of अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अभी 2-3 हफ्ते पहले की बात शेयर करता हूँ. वी हैड एन अपॉर्चुनिटी, एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ आवर्स, ये 1-2 साल पहले कनाडा मूव किया, एंड नाउ दे आर गेटिंग सेटल्ड. वी वर डिस्कसिंग सम न्यू बिजनेस आइडियाज. सो ही सेड, ओके यार, you do this and this, plant digitalization and designing and simulation things. Ikram. So he said, yeah, I've got a good friend of mine. He's been working for Rolls-Royce and Bombardier aircrafts, and I think we can get some good business from Canadian and North Indian markets. And let's do this. I know you can do this, and let me do the selling here, and you do the other technical stuff and data handling and this and that. I said, okay, let's go ahead. So plant digitalization is one thing. Design and simulation part was the other. When what about the design and simulation part? What is the part they're outsourcing? He said simulation part. Simulation of what? Jet engines and aircraft parts. They are designed in US or Canada. Now, and then the analysis and the simulation part of that designing is being outsourced to India, where Tata Consultancy is the biggest service provider from India. For simulation part, okay, you have designed this thing, but this has got this flaws. You can do topology study and design optimization, and then they suggest back to the actual manufacturers that this is the right design for you, and or this is the flaw. You know. Acha ji, Tetley is again a very, very interesting thing, and a very, very interesting acquisition. It was a change of business model for Tata Group after 100 years. When they started in 1868, until this acquisition 2000, this was the methodology or the approach towards their business was make in India, जो कहीं और इंडिया में नहीं हो रहा, बाकी दुनिया में हो रहा है, do it first thing in India. But Tetley acquisition में, Tetley क्या थी? You know Tetley? Chai. ठीक है, it's a UK brand, it's a British brand, and it was bought up by an Indian company. क्यों? इंडिया में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज आया था लेट 80s में. बिफोर 80s it was a closed economy.
सोशलिस्ट इकोनॉमी, रिस्ट्रिक्शन, ये करो ये नहीं करो, इस पे एनओसी मिलेगी, इस पे नहीं हो सकता, प्राइस टैगिंग मिलती थी, इससे ज़्यादा चीज़ नहीं कर सकते थे। लेट 80s में इंडिया ने विद इन few years they drastically changed their economic policy and India opened up. अब ओपन अप होने, आपको याद होगा इंडियन फिल्म्स, हमने अगर 80s 70s 80s की इंडियन फिल्म्स अगर आपने देखी होंगी, कौन सी गाने देखते थे आप? रिमेंबर कोई मूवी फैन फ्रॉम ओल्ड डेज? एम्बेसडर। कोई और गाड़ी होती थी, टैक्सी भी एम्बेसडर होती थी, प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी भी एम्बेसडर होती थी, और एक वो अगली लुकिंग महिंद्रा की जी गोल बत्ती वाली पुलिस की इंस्पेक्टर, जिसका इंस्पेक्टर साहब का पाँव बाहर रहता था। रिमेंबर फुटबॉल। ये दो ही गाड़ियाँ थी इंडिया के पास। यू नो, मैं इंटरेस्टिंगली तो आई वाज, इट्स अ सिंपल ऑब्जर्वेशन बट आई फेल्ट कि यार इतना जल्दी इसमें चेंज आया कैसे। ऐसी किसी थोड़े दिनों पहले किसी फेसबुक पे एक ओल्ड वीडियो किसी ने शेयर की, किसी 80s में किसी धर्मेंद्र के और जतेंद्र, इन लोगों की किसी मूवी की एक प्रीमियर थी, यू नो, और फिल्म की वो ओपनिंग थी और सेलिब्रिटीज कमिंग एंड दिस एंड दैट। तो फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर, डू यू नो व्हिच कार दे वर यूजिंग टू कम टू दैट फिल्म प्रीमियर? सुजुकी की एक बोलान होती है, बोलान जो है ना वो हाई रूफ है। एक सुजुकी का मॉडल, इससे पिछला मॉडल होता था लो रूफ वर्जन ऑफ सुजुकी, याद बहुत कम अब नजर आती है, तो आपको तो याद है। दैट वॉज द हाईएस्ट लेवल ऑफ लग्जरी दे हैड। एंड मारुति, सुजुकी मारुति, विच इज द मैरान वर्जन ऑफ मैरान, इट वॉज एन आइकॉन। highest level of luxury was Mehran, and that is just early 90s. और अब क्या हुआ? Third class D grade actor in a Bollywood movie, I think Porsche से कम तो बात नहीं है, Merc से कम तो नहीं। This is the level of change they have witnessed. क्यों? इकोनॉमिक पॉलिसी। अच्छा, फर्दर टेटले क्या, अब ये 3 लोगों की जो स्टोरी थी, देयर हैव बीन 6-7 चेयरमैन इन द हिस्ट्री ऑफ टाटा ग्रुप, स्टार्टिंग फ्रॉम जमशेदजी टाटा, ही वाज द पायनियर। द नेक्स्ट वन इज J.R.D. Tata, he is the guy we'll be talking about, and then the last one was Ratan Tata. Please, whenever you find time, study about Ratan Tata. He has got so much to tell you about being an entrepreneur, being a person, and being how to have humility in yourself once you have success. He could have been the richest person in the world, you know, or India, but still he chose not to be. What he earns out of his share, he gives it back in the philanthropic work or sub-social work. He just इसकी वर्क शायद मलिक व्यास से भी करूँ अपनी पर्सनल, बट इसके जो एस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट, सॉरी जो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू आई, J.R.D. टाटा, जहांगीर रतन टाटा, इनका कंट्रीब्यूशन जानते हैं क्या है? इंडियन एयरलाइंस। मैंने रिसेंटली इसी वर्कशॉप के लिए कुछ होमवर्क किया और कुछ चीजें अपनी रिफ्रेश की। The first, he is the pioneer of aviation industry in subcontinent, Jahangir Ratan Tata, the first one to bring commercial airline to subcontinent, and he was the first licensed pilot in subcontinent to fly an aircraft. Interesting, you know. The first flight was on 1932. This aircraft, a single piston, on 15th of October 1932. कहाँ से? कराची डिग रोड से, आपकी बेस से, एयरफोर्स, इट्स एयरफोर्स बेस राइट नाउ, एयरफोर्स बेस से बॉम्बे को, और एयर मेल इन्होंने डिलीवर की थी, उसका वेट था 35 kg।
This is how it started. ठीक है जी? J.D. Tata was the pilot himself. The aircraft type is heavy-line plus moth. Acquisition, acha. It went on to become a good airline, a commercial airline, and they expanded. But due to the Indian government's policy during early 50s, there was very highly socialist policies they used to have. And this Air India, just like Orient Airways, the predecessor of PIA in Pakistan, you know, it was bought and nationalized by Pakistan. PIA was a private airline at the time of 1947. It was Orient Airways, owned by Iswani family. So it was a private airline, and it was acquired by the government of Pakistan, and so was the government of India acquired Indian Airlines in 1953 for just 2.8 crore rupees. 2.8. Fast forward 69 years back, just last year, 2022 में इंडियन एयरलाइन का इंडियन गवर्नमेंट ने, जैसे हर गवर्नमेंट अपने इस तरह के वेंचर्स का सत्यानाश करती है, वो कर्जों में डूबी हुई और वही जो PIS टाइप के हालात में गुजर रही थी. अल्टीमेटली दे सेड इनफ इज इनफ. उसका कोई खरीदार नहीं था, जस्ट लाइक PIA का कोई खरीदार नहीं था, क्योंकि उसके एसेट्स नहीं इतने थे जितना उसके ऊपर डेट्स थी. They finally had no one else to buy. So ultimately government of India decided, okay, 6,000 करोड़ का इसका कर्जा जो है ना, ये will take care of it. बाकी 1,500 करोड़ रुपए वाला कर्जा आप में से कोई ले ले और ये कंपनी हमसे ले ले, प्लीज. And again, who came forward? टाटा. यही कंपनी जो उन्होंने 1953 में 69 ईयर्स पहले जो बेची, अब उन्होंने वापस इसको $2.4 बिलियन का 69 ईयर्स के बाद वापस कर दिया. इतनी अटैचमेंट थी उनके अंदर इस एयरलाइन के साथ, क्या इतने दिल के करीब थी वो? क्यों? एक डूबती हुई कश्ती के ऊपर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, 1,500 करोड़ रुपए का कर्जा, एक सिक एम्प्लॉय कल्चर, you know, 55, 58, 59 years की एयर होस्टेस, एक डीमोटिवेटेड पायलट, क्या करना था इस कबड्डी की दुकान पे लेके? They already had another, it's not mentioned here, they already had another Air Vista, there's another private airline, they were already owning an airline in India. You know, India is going to be the third largest aviation hub in the world in the next 15 years, third largest. They will be requiring another 2,000 aircrafts, passenger aircrafts in the next 15 years. And Tata knew about this business today. So they've acquired, they've gone for something which is, my colleagues here are telling me कि time हम थोड़ा सा आगे जा रहे, थोड़ा सा long है. Let me finish on this one. तो interestingly क्या हुआ इस dying airline के अंदर, you know how much they inducted? This is the biggest airline, new aircraft order in the history. 470 aircrafts. 470 aircrafts. 220 Airbuses and 220 Boeings and 250 Airbuses. 470 aircraft का ऑर्डर एक दिन के अंदर टाटा ने प्लेस किया फॉर एयर. क्यों? The reason was इस एक सिंगल ऑर्डर की जो वैल्यू है ना, दिस इज समवेयर अराउंड $80 बिलियन. ये क्यों करना था? will there be कितना इम्पैक्ट होगा इसका? What I've started, they're only targeting about 30 to 35% of the total market which will be developed in the next 35 years. They want to just capture at least 30 to 35% of the total travel market which will be developing in the next 15 years. This is not even 100%, you know. They need this industry, this area needs another 1,500 aircrafts. I'm talking about A350s and Boeing 787s. So this is Tata. Acha.
अब थोड़ी सी चीज़ों को मुझे क्विकली स्किप करना पड़ेगा ताकि मैं दो टॉपिक्स पे जिस पे मैं ज़्यादा बात करना चाहता हूँ उस पर मैं ज़्यादा बात कर सकूँ। ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, commonly read, everyone has it on their website, everyone talks about them. आपका क्या मिशन है कि मेरा मिशन ये है, बहुत बड़ी बड़ी बातें। मेरा विजन क्या है, मेरा विजन तो ये है कि मैं टाटा से भी बड़ा हूँगा, मैं एलन मस्क को तो पूछूंगा भी नहीं, ठीक है, उसको तो मैंने छोड़ना ही नहीं है। और मेरे वैल्यूज जो है ना वो ये कि ऑनेस्टी में जो है ना आई एम द वर्ल्ड लीडर, मैंने कभी कोई 2 नंबर काम नहीं किया। बट टू बी ऑनेस्ट विद यू, mission statement, developing a mission statement, having a vision and creating a value system for your organization is the biggest challenge you will face. आप में से वो लोग सुपर कामयाब होंगे जो जितना जल्दी एक रियलिस्टिक मिशन अपना डेवलप कर ले। इट्स नोइंग योरसेल्फ। मिशन इज नोइंग योरसेल्फ एंड स्टेटिंग योरसेल्फ। वे चाहता क्यों भाई अपने कारोबार से, अपनी जिंदगी से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। सो मिशन इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस। दिस इज द पर्पस ऑफ योर बिजनेस। प्लीज आज के दिन से इसमें आप स्टार्ट डेवलपिंग। यू माइट नॉट बी एबल टू कम अप विद अ मिशन इन फर्स्ट नाइट, इन फर्स्ट डे, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, might be 6 months, but please start working on it. The sooner you have some sort of a mission in your mind, it's better for you. That will dictate your direction. Without a mission and without a vision is just like a flying aircraft. आपने fly तो कर लिया, but you don't know where to land. Navigation system ही नहीं। So this is your navigation system. These 3 elements are the navigation system for your business. एक बात। दूसरी बात, ज़बानी मेरे जहन में मिशन है, मेरे जहन में विजन है और मुझे पता है मेरी वैल्यूज क्या हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं। इट्स अ डॉक्यूमेंट। It is something which needs to be communicated on every day to rest of your team, the people who you will be working with. You know, just imagine yourself as a film. मेरी जिंदगी के बारे में मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, मैं अपने बिजनेस के बारे में एक फिल्म बना रहा हूँ। फिल्म कैसे स्टार्ट होती है? What is the first step in film making? That is the second step. इससे पहले story. There's a difference between story and script. You know, story is the flow of events. Script is scene by scene, उसके dialogues क्या होंगे, ठीक है? It means इसको हम जो भी planning को face करते हैं, this is called no pre-production. The second phase is production, ठीक है? And the third phase is पोस्ट प्रोडक्ट। जब आप एडिटिंग करते हैं, साउंड एडिटिंग करते हैं, ग्राफिक्स में काम करते हैं, थिंग्स लाइक दैट, उसको फाइनल करते हैं। प्लीज अपने बिजनेस को एक फिल्म की तरह कंसिडर करें। कंसिडर योरसेल्फ, योर बिजनेस एंड योर लाइफ, कि मैं अपनी लाइफ और अपने बिजनेस की एक स्टोरी डेवलप कर रहा हूँ। सो द प्लानिंग पार्ट ऑफ योर बिजनेस इज द स्टोरी डेवलपमेंट। यू नो, जस्ट इमेजिन, यूज योर क्रिएटिव माइंड। और उसका जो प्रोडक्शन स्टेज है ना, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेटर। अच्छा, अब है फंक्शनल पार्ट्स। दिस इज समथिंग, दिस इज द एक्चुअल पार्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। बिजनेस फंक्शंस होते क्या क्या हैं? आप में से किसी ने कभी पहले बिजनेस फंक्शंस को कंसिडर किया है कि बिजनेस फंक्शंस क्या क्या होते हैं? डेवलपमेंट or manufacturing or coding is, I believe, one of the 10 or 12 function in a business. But what about the rest? ठीक है? Business is absolutely just like a well-oiled engine. कार का इंजन कैसे काम करता है? कोई एनिमेशन तो देखी होगी, गाड़ी हम सब ड्राइव करते हैं। सेल्फ दिया, ठीक है, सेल्फ ने स्पार्क क्रिएट किया प्लग्स में, फायर सिस्टम स्टार्ट हुआ, पिस्टन्स की मूवमेंट स्टार्ट हुई, पिस्टन की मूवमेंट ने क्रैंकशाफ्ट को रोटेशन दी, उसने आगे एक्सेल मूव किया, रोटेशन स्टार्ट।
स्टीयरिंग सिस्टम लेफ्ट हैंड, जितना एक्सीलरेटर दोगे गाड़ी इतनी ज़्यादा चलेगी, स्पीड पकड़ेगी। क्यों? पिस्टन की मूवमेंट तेज। ब्रेक करोगे फिर ब्रेक दो। जितनी अच्छी मॉडल की गाड़ी होगी, जितनी अच्छी कीमती गाड़ी होगी, मर्सिडीज होगी, BMW होगी, उतनी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस। क्यों? उसकी इंजीनियरिंग उतनी साउंड है, उतनी रोबस्ट है, उसके डिज़ाइन, उसके ऑल कंपोनेंट्स दे वर्क इन कोलैबोरेशन विद ईच अदर परफेक्टली। एन एयरक्राफ्ट कितने पार्ट्स होते हैं? मिलियंस ऑफ पार्ट्स, है ना? हर दफा स्टार्ट करोगे चलेगी। तो इसी तरह बिजनेस के लिए इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज योर बिजनेस आपको उसकी जो फंक्शनल एरियाज होती हैं डिफाइन करनी चाहिए। सिंपल डेफिनेशन में अगर मैं कहूँ तो अगर आप सिमिलर फंक्शंस को कंबाइन करते जाएं, एक जैसे कामों को डिफरेंट काम मिलते हुए एक बिजनेस के डिफरेंट फंक्शंस डेवलप हो जाते हैं। क्या क्या होते हैं? फाइनेंस, सेल्स एंड मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट। दिस इज फर्दर elaborated over here. So what do we have? We have got planning, we have got designing, we have got raw material and procurement functions, we have got manufacturing or development. These are the same things. अब प्लीज नोट कीजिएगा, ये जो आपका फंक्शन है ना मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट, इट माइट वेरी। आप कोडर हैं, आप पाइथन पे काम करते हैं, इट इज समथिंग एल्स फॉर यू। आपका फॉर एग्जांपल एंड्रॉइड पे वाले हैं, कोई वेब वाले हैं, कोई एयरक्राफ्ट यूएवी को कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई गाड़ी का पार्ट कोई बना रहा है, कोई बम्पर बना रहा है, वट एवर द बिजनेस, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, आपका जो सर्विस है, प्रोडक्ट है, यू नो दिस इज द ओनली थिंग विच विल वेरी, ओनली थिंग। ये जितने भी बाकी रेस्ट ऑफ द बिजनेस फंक्शंस है ना, रिटेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसेस, HR, फाइनेंस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल, सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर, रॉ मटेरियल, they remain, these functions remain same irrespective of आप कोई सा भी बिजनेस कर रहे हैं। आप गाड़ी बनाते हैं, आप मिठाई बनाते हैं, आप जहाज बनाते हैं, आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ये सिर्फ एक फंक्शन चेंज होता है, द रेस्ट ऑफ द फंक्शन दे रिमेन सेम फॉर एनी बिजनेस, छोटा बड़ा irrespective। अच्छा जी, अब सबसे पहली बात आई, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपको डिटरमाइन करेगा कि इधर यू विल एग्जिस्ट और नॉट, यहां है। पंखा चलता है नहीं चलता, सॉफ्टवेयर की कमांड चलती है नहीं चलती, इट डज वंडर, वेरी नाइस, इससे कोई लेना देना नहीं। इधर यू विल स्टे इन द बिजनेस और नॉट, ये चीज। नाउ व्हाट इज फाइनेंस? 3 शॉर्टेस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, फाइनेंशियल रिसोर्स प्लानिंग एंड एलोकेशन। फाइनेंशियल रिसोर्स, पैसे की प्लानिंग, आएगा कहाँ से, खर्चा कहाँ करना है, किसको कितना देना है, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिसोर्स प्लानिंग। प्लीज इसको जरूर फाइनेंशियल रिसोर्स प्लानिंग 10 मिनट के लिए जरूर इसको स्टडी करें, बिकॉज दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू लर्न दिस थिंग डाउन द लाइन। ठीक है? What is the next one? Ensure that financial obligations are fulfilled. दफ्तर आना है, दफ्तर आने के लिए काम पे जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, नाइके जाना है, साबित गुजरा आना है, घर से निकलने के लिए पहले आपकी जेब में पेट्रोल के पैसे होने चाहिए। बाइक पे आते हो, गाड़ी पे आते हो, बस में आते हो, समवेयर, यू नो, मोबाइल से बात करने के लिए आपको किसी के, आपके मोबाइल में बैलेंस होना चाहिए। अगर आपने किसी को एम्प्लॉय रखा है तो उसकी सैलरी देनी है, अगर आपने स्पेस एक्वायर कर रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, किसी से आपने कोई चीज़ खरीदी है उसको उस चीज़ के खरीदने के पैसे देंगे। हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की कुछ ऑब्लिगेशंस होती है, बिजनेस की ऑब्लिगेशन। तो फाइनेंस आपको ये इंश्योर करता है कि आपकी ऑब्लिगेशंस कंप्लीटली फुलफिल्ड हों। ठीक है ना? देन कम्स टाइम बाउंड एनालिसिस, प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग एंड टूल। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, प्लीज नोट दिस डाउन। ये एक टाइम बाउंड एक्टिविटी है। द यूनिवर्सल रूल इज financial planning is done on yearly basis. For some countries, the plan starts on 1st of January, ends on 31st of December. For some countries like Pakistan, us, our financial year, when does it start?
1st July to 31st of June. It means आपका फाइनेंशियल प्लान जो होता है, जो भी डॉक्यूमेंट होगा, जो भी आउटलुक होगा या एनालिसिस होगा, दैट विल बी ऑलवेज बिटवीन अ पीरियड, अ स्टार्ट डेट एंड एंड डेट. फाइनेंशियल प्लानिंग जो होते हैं, इट्स नॉट अबाउट कि आपकी मर्जी है मैं जब कर लूँ या ना करूँ. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स अ टाइम बाउंड एक्टिविटी. वे टू स्टार्ट फ्रॉम, मुझे कुछ नहीं पता फाइनेंशियल प्लानिंग क्या चीज़ है, किस चिड़िया का नाम है. वे टू स्टार्ट फ्रॉम, दिस इज माई पर्सनल सजेशन. यू शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर. बजट. बजट हम सब ने सुना हुआ होगा, कभी घर में भी सुना होगा, अम्मा के मुंह से, अब्बा के मुंह से, यार इस महीने का बजट ज़्यादा टाइट हो गया, लेट्स स्किप दिस थिंग. यू नो, दे हैव गॉट सम सॉर्ट ऑफ अ फाइनेंशियल प्लान फॉर द मंथ. क्या है बजट? ओनली 2 थिंग्स. कहाँ से कितने पैसे आने, कहाँ से पैसे आने, कितने पैसे आने, नंबर 1. नंबर 2, कहाँ खर्च करने और कब खर्च करने. दैट्स इट. दिस इज अ बजट. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बजट क्या होता है? सेम थिंग. खर्चा कहाँ कहाँ करना है, इनकम कहाँ से आनी है. गैप क्या होता है? गैप इज कॉल्ड बजट डेफिसिट. बजट डेफिसिट कहाँ से पूरा होगा? डेट्स या डेफिसिट पेमेंट्स. यू वोंट बी स्पेंडिंग ऑन थिंग्स जिनको आपने स्पेंड करना था. सो दिस हाउ यू मैनेज. सो प्लीज स्टार्ट फ्रॉम द बजट. बजट इज the basic principle document we need to work out. और वो कहाँ से start करना है. Now if you are a company who is functioning right now, Abdullah, you are functioning since 17. अच्छा, अब्दुल्ला, आपने 17 के बाद से अभी तक कभी बजट बनाया? Formal. I know there is something in your head, you know कितने पैसे आते हैं, कितने पैसे जाते हैं, बट आपने कभी डॉक्यूमेंट बनाया? जो बेसिकली फाइलिंग और ऑडिटिंग होती है वो तो हम करते हैं. वो तो उसी में काम होता है. जो वो ओरिजिनल करते हैं, जेन्युइन कितने परसेंट जेन्युइन और 100%? यस. गुड जॉब. क्लैप्स फॉर अब्दुल्ला. मैंने तो पहली दफा आदमी ये सुना है भाई, ऐसा होता नहीं. We all lie. We do the test guys. ठीक है. इसमें there's a lot of manipulation. ये एक अलग चैप्टर है. Anyways, budgeting means आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है कि डाउन दी लाइन मेरे क्या एक्सपेंस होंगे, पॉसिबिलिटीज, और मैं कहाँ से करूँ. एक्सपेंस क्या क्या है? आउटले, आउटबाउंड, जो खर्चा आपको करना ही पड़ेगा. फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट. कंप्यूटर मैंने लेना है, दैट इज माई फिक्स कॉस्ट. मुझे ये एक फिक्स कॉस्ट, ये चीज़ एक है, ये मैं लेनी ही लेनी. बिजली का बिल इज अ वेरिएबल कॉस्ट. पेट्रोल का बिल इज अ वेरिएबल कॉस्ट. जितना यूज करोगे उतना ही आएगा. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड दी कैपिटल कॉस्ट. दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉसिबल एक्सपेंस और द कैश आउटफ्लो. आपके जेब से ये पैसा जाना ही जाना है. अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है? स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स. 1 महीने का अपना बजट बनाओ एक्सेल शीट पे. सिंपल लिस्ट डाउन द पॉसिबल एक्सपेंसेस. घर से निकलने का बजट, मोबाइल का बजट, ऑफिस के रेंट का बजट, इंटरनेट का बिल, प्रिंटिंग का बजट, क्लाइंट के पास जाके बात करने का बजट, सॉफ्टवेयर पे सब्सक्रिप्शन ली हुई है उसके पैसे देने हैं. जो कोई पॉसिबल नेक्स्ट 30 डेज में आपके आउटफ्लोज हैं, प्लीज लिस्ट देम डाउन. यू सी कि मेरा ये इसके बगैर काम नहीं होगा भाई. मेरी जेब में पैसे नहीं हैं तो मैं दफ्तर नहीं जा सकता, चाहे वो 100 रुपये ही क्यों ना हो, 1000 रुपये ही क्यों ना हो. प्रिंटिंग अगर कराने के लिए टोनर नहीं है, मुझे प्रपोजल प्रिंट करना है, यू नीड टू बाय अ टोनर. चाहे उधार लेके करो या करो, बट थिंग्स नीड्स टू बी डन. There's some things, the minimum requirement of the business which cannot be avoided, so you have to take care of these expenses. Number 1. Number 2, अच्छा देखिए, ये आपने खर्चा किया नहीं है. You are just planning right now. You are anticipating what you are going to face in next 1 month, in 6 months, in 1 year time. Salaries, you know. So budgeting is the step number 1 in financial planning. उसके 2 कंपोनेंट्स हैं, आउटगोइंग एंड इनकमिंग. कहाँ से पैसे आ सकते हैं?
तीन ही वैल्यूज हैं, चौथा है लीगली until and unless you're considering कि यार उड़ा लेते हैं तो बैंक, ठीक है। सेल्स रेवेन्यू एक पॉसिबिलिटी, मैंने सेल्स की, वहां से पैसे आ जाएंगे, सर्विस कोई दी, वहां से पैसे आ जाएंगे, कोई चीज बेची। सेकंड थिंग, इन्वेस्टमेंट लेके आए हूं, अपनी जेब से इन्वेस्टमेंट की, फैमिली की जेब में से लिया, किसी पार्टनर ने डाले पैसे, बैंक से किसी को अपना पार्टनर बना दिया। एंड द लास्ट पॉसिबिलिटी इज क्रेडिट, उधार से, इंडिविजुअल भी हो सकता है, बैंक की फाइनेंसिंग भी हो सकती है। यही तीन पॉसिबल लीगल वेन्यूज हैं एक कंपनी के अंदर पैसे आने के, जाने के बहुत सारे हैं, ठीक है। अब ये देखिए कि क्या बैलेंस क्रिएट हो रहा है। पहला टारगेट तो आपका था कि पैसे चाहिए कितने, माय सजेशन इज स्टार्ट विद 1 मंथ एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली क्वार्टर की प्लानिंग करना शुरू करें। फर्स्ट डू प्लानिंग फॉर द फर्स्ट 3 months, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ। जब 3 महीने की आपने प्लानिंग कर ली तो इट मीन्स कि आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक बन गया कितने का, 3 months का। 3 months इज अ क्वार्टर ऑफ अ ईयर, so now you have the ability to plan for the next quarter। अब आपने 3 महीने, एक महीने की प्लानिंग की थी बजटिंग, अब आप अपने क्वार्टर की प्लान करें, 3 महीने की एडवांस वन टाइम प्लान करना, ठीक है। जब क्वार्टर कंप्लीट कर देते हो तो फिर आपके पास 6 मंथली प्लान बन जाते हैं, इवेंचुअली आप ईयरली प्लान पे आना स्टार्ट हो जाए। सो इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, और इसकी कोई वो नहीं है, मैग्नीट्यूड नहीं है कि मैं कहां से बजटिंग स्टार्ट करूं। आपका 10,000 रुपए का कारोबार क्यों ना हो, यू स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट। जो लोग 10,000 की वैल्यू को समझते हैं और 100 रुपए को 1,000 में कन्वर्ट करना उसकी वैल्यू को समझते हैं, वो एक दिन 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन को भी हैंडल कर सकेंगे, 1 बिलियन की भी हैंडल कर सकते हैं। जो 1 लाख की ट्रांजैक्शन को भी नहीं प्लान कर सकता, वो 1 बिलियन की ट्रांजैक्शन को प्लान नहीं कर सकता। You know, so this is the significance of 100 रुपए। Start with micro steps. Budget is the first thing you need to start to in terms of financial planning. Number 1. Then is operational cost and cost of goods sold. Please do the costing right. There are two things. What is cost of goods and what is the operational cost? What is the cost of goods sold? भाई आप एक डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपने एक ऐप डेवलप की, now you're selling that app or a service to someone. What is the cost of that app? What are the man hours behind that app? कितने रिसोर्सेज लगे थे उसमें, ऑफिस का रेंट कितना लगा था उसमें, डू द कॉस्टिंग, डू कंसिडर रेंट कितना लगा था, ट्रैवलिंग कॉस्ट क्या लगी थी, एक्विजिशन कॉस्ट क्या लगी थी, मेरी इसके लिए मुझे सिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा, इसकी कॉस्ट क्या होगी, रैम बढ़ानी पड़ेगी, इतनी कॉल्स करनी पड़ेंगी, फलाना ढमकाना। दैट इज योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। प्लीज नो योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। विदाउट नोइंग योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड you will not be able to quote your price. Cost आपकी एक्चुअली प्राइस डिटरमाइन कराती है कि मैं इसको बेचूं कितने, इतने का तो मुझे पड़ता है भाई, ठीक है। तो अगर आपको 100 रुपए की चीज पड़ रही है और आप उसको 80 रुपए का आगे को बेच रहे हैं तो व्हाट यू आर डूइंग, डैमेज योरसेल्फ। फर्स्ट इज फाइनेंशियल एनालिसिस। देयर आर सो मेनी फाइनेंशियल एनालिसिस अवेलेबल, बट अ वेरी बेसिक वन, break-even analysis. Now, what is break-even analysis? This point. Break-even is a point over here, जहां पे आपका रेवेन्यू इस लेवल पे आप अपना जनरेट कर देते हैं in terms of number of unit sold, जहां पे आपकी कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर हो जाए, 0-0। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक टीम डेवलप की, उस टीम में 3 लोग हैं, मंथली आप 3 लोगों की डेवलपमेंट का जो खर्चा, द सैलरी, द परसेंट सैलरी यू विल टेकिंग होम, कॉस्ट ऑफ बिजनेस इज लेट्स सपोज 2 लाख रुपए अ मंथ, ठीक है। आपको पता है कि मैंने इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए आई नीड 6 months। 3 लोग 6 लाख रुपए पर मंथ प्लस एडिशनल 2 लाख रुपए फॉर XYZ एक्सपेंसेस, 4 लाख रुपए पर मंथ। आई नीड 4 लाख रुपए पर मंथ for 6 months. So 4 lakh multiplied by 6, 24 lakh.
अब 2.4 million is your first target. 2.4 million का प्रॉफिट अर्न करोगे तो एक्सपेंस जो किए हैं 24 लाख, ये आपके पहला आपका टारगेट अचीव होगा. यू आर एट नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस. फाइनेंशियली नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस, ब्रेक इवन. इकोनॉमिकली नो, यू आर एट लॉस. इफ यू डोंट अर्न profit at this stage, the opportunity cost has been lost. You could have earned something. You have wasted 6 months. You have directed your resources into a project. You invested your resources into the project, but you could not make a profit. You just did 0-0. Economically, that's a loss. That's a lost opportunity. Okay? But financially, it is 0-0 is not a loss. So break-even analysis is one of the basic ones. Then what about the return on investment? Very commonly term used, बहुत commonly used होता है ये analysis. Return on investment. Basically आपकी business की value, idea की value जो है ना, अगर किसी कोई investor से आप जाके पूछें, आपका बेटा क्या idea था? स्टार्टअप क्या था? साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज का. साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज. आपका क्या था? Mind well-being, basically mental health app. सॉरी? Mind well-being, a mental health app. मेंटल हेल्थ. ओके. लेट्स सपोज आप दोनों की ऐप को डेवलप करने के लिए यू से आई नीड 50 डेवलपर्स. आई नीड अ साइकियाट्रिस्ट, आई नीड फलाना, आई नीड एआई गाय, I need a coder फलाना, और I need a team to develop. ठीक है? और मैं ये एक साल में, if I have these resources, इतनी building, इतने computer systems, I'll be able to come up with this brilliant idea. Please invest into me. ठीक है? Venture capitalist, I need 10 million rupees to get this thing done. Venture capitalist सबसे पहले आपके 10 मिलियन के अगेंस्ट पहला सवाल अपने आप से क्या पूछेगा और आपसे क्या पूछेगा? What will be the first question? ROI. आपकी इन्वेस्टर जो है वो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे गेज करता है कि आपका बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल, कितना प्रॉमिसिंग है. अगर मैं आपको 10 मिलियन रुपीस एक साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और रिटर्न आई विल बी अर्निंग आउट ऑफ 10 मिलियन रुपीस? दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. द बेसिक सवाल प्लीज अपने बिजनेस में ये देखें कि मैं मेरे बिजनेस की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है. स्टडी दिस वन. इनिशियल गेज है आपका, अच्छी शक्ल देख के, बातें अच्छी सुन के, अच्छा दफ्तर देख के, गाड़ी अच्छी देख के एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर, एक बैंक आप पे इन्वेस्ट नहीं करता. फॉरगेट अबाउट इट. इन्वेस्टर आपके आइडिया का सुनता है, आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसकी पहली ये उसके लिए मैग्नेट है. इफ यू आर ऑफरिंग अ गुड ROI, गुड, यू आर द वन. अच्छा बुरा ROI क्या होता है? कंपैरिजन मैट्रिक्स क्या है? आज का स्टेट बैंक का फिक्स डिपॉजिट के ऊपर कितना परसेंटेज बेस रेट स्टेट बैंक का क्या चल रहा है? एनी आइडिया? Very outdated information. The policy rate is about 20% आज, without any risk. आप बैंक में जाएं, पैसा लगाएं, आपको एनुअली 20% रिटर्न मिलेगा, जीरो रिस्क पे. Any business is only viable for you if you are making down the line, if you are making 20% return जो है आपको रिटर्न मिल रहा है, तो then it's a viable business. क्योंकि आप रिस्क भी उठा रहे हैं, लॉस भी हो सकता है, तो एटलीस्ट 1% तो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट से ज्यादा मिले ना. तो बैंक इंटरेस्ट रेट और जो आपका जो स्टेट बैंक की जो
बेस पॉलिसी रेट होता है, दैट इज दी योर अल्टीमेट बैरोमीटर, जहाँ से आपने अपॉर्चुनिटी कंपेयर करनी कि भाई 1 लाख रुपए बैंक में डाल के साल के 20,000 रुपये कमा लूँ कंफर्म विदाउट रिस्क, या मैं 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में डाल के 20,000 में मैं उसको एटलीस्ट 30,000 50,000 रुपये में किसान। इफ यू आर अर्निंग लेस देन 20 रुपीज यू आर डूइंग रॉन्ग। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वन ऑफ द थिंग्स। अब दूसरा फेज हमारा है दैट इज अकाउंटिंग। अभी तक तो हमने जो फेज कवर किया था दैट वाज अबाउट प्लानिंग, हमने वो ट्रांजैक्शंस की नहीं थी, वो पैसे कहाँ खर्चने थे हमने किए नहीं थे। नाउ जस्ट एज्यूम कि अब पैसे आपके पास अकाउंट्स में आ चुके हैं, जो प्लान आपने बजट में किया था, सैलरी देनी थी, पेट्रोल का बिल देना था, ऑफिस का रेंट देना था, सिस्टम खरीदना था, टिकट बाय करना था, लाइसेंस की फीस देनी थी, XYZ। नाउ एवरीथिंग इज हैपनिंग, सेल परचेज हो रही है। You need to have this thing in place from day one, and this is called accounting cycle. Please इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेना, अच्छा खासा स्टडी करना, थोड़ा सा नहीं, and start practicing it. अकाउंटिंग साइकिल जो है उसकी सिंपल बात अगर हम करें तो इसका स्टार्ट्स फ्रॉम द, इसके 2 एलिमेंट्स हैं, बुक कीपिंग एंड द रिपोर्ट्स। ठीक है, बुक कीपिंग इज अबाउट सोर्स डॉक्यूमेंट, जर्नल्स, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस एंड दी फाइनेंशियल। ये स्टेप्स इन्वॉल्व है। ट्रांजैक्शन यहाँ पे हुई, उसके सोर्स यहाँ पे है, पेट्रोल का बिल का रसीद, इनवॉइस, चालान, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की कोई भी शक्ल। सो व्हाट यू वुड डू दैट, you have to record that transaction somewhere, and that thing is called journals, and then journal is posted into a document. This is kind of actually a document. It's a physical book or it's a software. It's up to you which one you like to use. You know, QuickBook use करते हो, Peachtree use करते हो, so many other accounting software हैं, या स्टेशनरी की दुकान से जाके अकाउंट्स बुक का एक मैनुअल खाता खरीद देते हो 500 रुपये, सेम थिंग। सो लेजर क्या है, आपके इंडिविजुअल अकाउंट्स में जो पॉसिबल ट्रांजैक्शंस होनी है ना, सैलरी का ट्रांजैक्शन, रेंट का ट्रांजैक्शन, बिजली के बिल की ट्रांजैक्शन, पेट्रोल के ट्रांजैक्शन, ये आपके लेजर्स होते हैं। एंड देन फाइनली यू विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस ट्रांजैक्शन, अभी एक लिस्ट ट्रांजैक्शन बनी, जस्ट अ टेबल, नथिंग एल्स। एक टेबुलर फॉर्मेट में आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, बट that journal is actually a base record but a meaningless thing. You cannot interpret it, उसकी interpretation आपके लिए कुछ भी नहीं आपके साथ, interpretation के लिए नहीं, और इसकी कुछ meaningful उसमें से अपने लिए मतलब निकालने के लिए आपको ये कुछ documents, reports form करनी पड़ती हैं, and this is where you start to judge your financial health. ठीक है, remember बजट में हम सिर्फ प्लानिंग कर रहे थे, वो सिर्फ प्लानिंग फेज था, अब ये एग्जीक्यूशन है, एक्शन हैज बिगन। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। दुनिया की छोटी से छोटी कंपनी हो या दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हो, एप्पल हो, टाटा हो, एनीवन, हबीब बैंक हो, अब्दुल्ला की मैथलेटिक हो, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हो, चार किसी भी बंदे की जो वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ को देखने के लिए यही 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। अब ये कैसे दिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। आई विल स्किप दिस वन, ये थोड़ा सा आज के लिए मुझे लगता है टाइम थोड़ी सी कॉन्स्टेंट है, ये बाद में प्लीज टेक सम टाइम एंड इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। 5 एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 4-5 ही टाइप की ट्रांजैक्शन होती हैं अकाउंट्स में, देयर इज नो छठा टाइप। ठीक है, एक टाइप की ट्रांजैक्शन होती है वंस यू आर ईदर सेलिंग एन एसेट और बाइंग एन एसेट, नंबर 1। द अदर वन इज कॉल्ड एक्सपेंस, फिक्स एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक्सपेंस लायबिलिटी क्या है, क्रेडिट, उधार के पैसे, उधार की ट्रांजैक्शन, कैश में लिया या एक कोई चीज डेफर्ड पेमेंट में लिया, उसके पैसे देने, तो इट्स अ लायबिलिटी। व्हाट इज इक्विटी,
इक्विटी इज योर पर्सनल इन्वेस्टमेंट इनटू द सिस्टम। ये वो पैसा जो आप घर से लेके आए थे, ठीक है, इधर आपके पेरेंट्स ने आपको दिए या आपने अपनी गाड़ी बेची, किसी ने प्लॉट बेचा, जो आपकी पर्सनल इक्विटी थी, आपकी, आपके पार्टनर की, कंपनीज की, शेयर होल्डर्स की, दैट इज इक्विटी। एंड रेवेन्यू, द अमाउंट ऑफ मनी विच यू गेट फ्रॉम सेल्स, दैट इज रेवेन्यू। यही पांचों एलिमेंट्स हैं, हम हेड ऑफ द अकाउंट्स भी कहते हैं, यही जनरल में नोट होती हैं। छठे टाइप की कैटेगरी अकाउंट्स में कोई एग्जिस्ट नहीं है। सो एवरी ट्रांजैक्शन विच एवर यू डू, चाहे वो 1 रुपए की, 1 करोड़ की है, 10 करोड़ की है, इन्हीं पांचों में से किसी एक टाइप की होती है। अब हम इनको कैसे यूज करते हैं? 5 टाइप्स आपने देख लिए। फर्स्ट डॉक्यूमेंट, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, सेहत बताने के लिए कि आप कैंसर में हैं कि नहीं, दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट। इट्स अ मैथमेटिकल इक्वेशन, सिंपल। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। यानी कि आपके एसेट्स, मेरे पास क्या पैसे पड़े हुए, कैश इतना है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज इतनी है, अकाउंट रिसीवेबल इज एन एसेट, पैसे आने, इन्वेंट्री मेरे पास सामान इतने का पड़ा हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंस मेरे इतने, टोटल करंट मेरे एसेट्स इतने, ग्रॉस वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी और प्लांट मेरी इतनी है, डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस कर देता हूँ इतनी है, एंड इवेंचुअली दिस इज द वैल्यू ऑफ माय एसेट, 8,374 एसेट। A is equal to, assets is equal to liabilities plus owner equity. This is the equation. अगर आप liabilities कितनी है, इतनी liabilities है, इतनी owners equity है, these two number has to match with each other. 8,374 is equal to 8,374. This is simple balance sheet. This is a balance sheet. इनमें से 1 रुपया भी ऊपर नीचे हो जाता है तो it means के रिकॉर्डिंग में कहीं पे मिस्टेक है, आपने एक ट्रांजैक्शन मिस की हुई है, आपका जर्नल इनकम्प्लीट है, या आपने टोटलिंग में मिस्टेक की हुई है। सिंपल, 1 रुपया भी अगर इसमें दोनों के इस इक्वेशन में बराबर नहीं होता, देयर इज अ मिस्टेक। सलीम, द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट विच विल हेल्प यू, दिस कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, P&L अकाउंट। ये बैलेंस शीट, वैसे बाय द वे ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वार्टरली जनरेट होती हैं, ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस पे जनरेट होती हैं। बैलेंस शीट आप हर रोज, कंपनी की बैलेंस शीटें नहीं बनती, आप ट्रायल बैलेंसेस जो होते हैं वो क्वार्टरली बनाते हैं, दैट को आप मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे क्लोज करते हैं। जनरली बैलेंस शीट आप अपनी 6 मंथली या आप एनुअली बनाते हैं, ठीक है। ऑफिशियली आपको अपने जब टैक्स रिटर्न्स अपने फाइल करने होते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को अपने रिटर्न शो करने होते हैं, तो वो क्वार्टरली अपनी रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं कि यार इस क्वार्टर की हमारी परफॉर्मेंस ये रही है, ठीक है। जिस तरह आपको याद होगा, कभी आपके अगर बैंक से कभी ताल्लुक पड़ा होगा, तो बैंक जो होते हैं वो जून के लास्ट वीक में जो है ना वो पैसे मिलते कर रहे होते हैं मैनेजर के, यार पैसे ना निकालें, जरा 1 हफ्ता रहने दे, बैलेंस अच्छा रहेगा। कंपनियां पे नहीं कर रही होती, जरा ये क्वार्टर गुजर जाए, पहली को पेमेंट ले लें, 29 को पेमेंट मांगे। क्यों? फाइनेंशियल हेल्थ शो ज़्यादा करनी होती है कि हाँ यार लिक्विडिटी पैसे हैं, क्योंकि अब जो उन्होंने रिपोर्ट अपने शेयर होल्डर्स को या कंसर्न डिपार्टमेंट को जो वो करनी होती है वो 30th तक की करनी होती है, उस दिन उनके पास ज़रा अच्छे नंबर्स होते हैं दिखाने के लिए, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बताती है कि आप प्रॉफिटेबल हैं कि नहीं। सिंपल अगेन, इट्स अ मैथमेटिकल इक्वेशन। Revenue minus cost of goods sold minus operating expense is equal to operating profit minus taxes is equal to net profit. Simple. आपका आइडिया चांद से मट्टी इंपोर्ट करके घर बनाने का क्यों ना, या आपकी ट्रांसपोर्टर मशीन ऐसी है कि वो 1 घंटे में मार्स क्यों ना पहुंचा दे, पर इधर अगर आपका नंबर जो है वो 0 में है या प्लस में नहीं है या आपका माइनस है, योर एक्सपेंस आर ओवरकमिंग योर रेवेन्यूज, आपके रेवेन्यूज कम है, आपके एक्सपेंडिचर्स और ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, आइडिया को कोई नहीं पूछेगा, यू आर गोइंग।
you're a loss making entity. You need to find some sort of a way कि इस माइनस नंबर को प्लस में कैसे लेके जाऊं, या जीरो को प्लस में कैसे मूव करूं. जितना खूबसूरत आइडिया क्यों ना हो, माइंड ब्लोइंग आइडिया क्यों ना हो, जितना हार्ड वर्किंग आप क्यों ना हो, जितना कमिटेड आप क्यों ना हो, जितनी खूबसूरत डेडिकेटेड टीम आपके पास क्यों ना हो, you will be only judged by this number. That's it. P&L account, दुनिया हार्श है, ठीक है ना. Then it's again एक और बड़ा इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट होता है which is called cash flow statement, which ये बड़ा डॉक्यूमेंट होता है आपके डे टू डे रिक्वायरमेंट्स, मंथली रिक्वायरमेंट्स, ईयरली रिक्वायरमेंट्स को पूरा देखने के लिए. इट्स सिंपली द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो के मेरे आउटलेस कौन से हैं और मेरे एक्सपेक्टेड अगले एक महीने में पैसे आने कहाँ से हैं, एक्सपेक्टेड पैसे देने कहाँ, ठीक है, ताकि आप अपनी कैश रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें, अपने इंजन को चलाते रहें. We are having a cash flow problem also. Genuinely, Quality Solution, we as a company, हमारे रिसीवेबल्स के अमाउंट पिछले 2 सालों से बहुत ऊपर चले गए. मार्केट के पैसे मिल रहे नहीं, ठीक है, और नए बिजनेसेस क्राइसिस की वजह से अपॉर्चुनिटी सेल कम हो गई है. अब एक एंड पे मैं अगर अपनी इक्वेशन को मैं देखूं ना, बैलेंस शीट में, हाँ यार मेरे एसेट्स भी ठीक हैं, मेरे जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेरा जो ये वाला नंबर है अकाउंट रिसीवेबल वाला, ये तो बड़ा है, लायबिलिटीज मेरी कम है, मैं इन बुक्स ठीक हूँ, आई एम ओके. पर मुझे प्रॉब्लम ये है कि मैंने 10 करोड़ रुपए मार्केट से लेने हैं, वो मेरा एसेट है, वो मेरे पैसे, दैट्स फाइन. मेरे पास 1-2 करोड़ रुपए का इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, बट मुझे अभी 10 लाख रुपए चाहिए अगले महीने की रेंट और बिजली का बिल भरने के लिए, मेरे पास वो 10 लाख नहीं आ रहे. दिस इज अ प्रॉब्लम. नाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी टैकल्ड बाय इफ यू आर एबल टू मैनेज a good and a reliable cash flow statement. किस तरह फाइनेंस की जो कैश की मैनेजमेंट, इनकमिंग और आउटगोइंग की आपकी जो मैनेजमेंट आपने करनी है, दिस कैन हेल्प यू टू मिटिगेट दीज चैलेंजेस. ठीक हो गया? चलो. It's an informal session also. अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप पूछ सकते हैं, प्लीज. नंबर 1, तो क्योंकि मेरे जहन में कहा गया है, मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी आपने बात की रिसीवेबल्स की, और अगर आप के पास आपने बिजनेस कर लिया है, कुछ चीज़ें आपने डिलीवर कर ली हैं जिनकी अभी पेमेंट नहीं हुई, और लेट से उसकी वर्क थी लेट से 30 लाख रुपीज विच यू आर एक्सपेक्टिंग टू गेट, तो इस बैलेंस शीट में क्या वो एसेट्स में शो करेंगे? यस. अकाउंट रिसीवेबल्स हियर. Although you have not received those amount, but it is your asset. That is your asset. यहाँ पे they are receivables. That is an asset. पे करनी है, परचेज आपने कर ली, पे की नहीं, that is liability. Accounts payable. जो आपने ले लिया पर पे नहीं की, जो ले ली वो पे नहीं किया, सिस्टम में आ गया आपके पास, ठीक है, यूज आपने करना स्टार्ट कर दिया, एक्वायर कर कुछ पे नहीं किया, अब आ गया क्लोजिंग टाइम, आ गया मंथ की 30th है, you haven't paid yet. Now on that day, that is accounts payable, that's a liability. पर उस दिन किसी ने आपके देने थे 3 महीने, पर अभी तक आपके पास वो पैसे आए नहीं, on that day, that is account receivable. ठीक है? एनीथिंग बेटा? जी सर, डेप्रिसिएशन भी इसमें हम काउंट करते हैं? यस. काम गई ये रही. Here.
एसेट माइनस हो रही है, आप अपनी करेक्शन कर रहे होते हैं डेप्रिसिएशन की, एसेट की करेक्शन कर रहे होते हैं, डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस कर रहे होते हैं टू कम अप विद द रियल वैल्यू ऑफ द एसेट। तो ये जो हम मैप करते हैं वो जो कंट्री की डेप्रिसिएशन हो रही थी करेंसी, हाँ देखिए नहीं, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स। एयरक्राफ्ट की डेप्रिसिएशन कॉस्ट अलग तरीके से कैलकुलेट की जाती है, ठीक है, कार की डेप्रिसिएशन कॉस्ट अलग तरीके से की जाती है, पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में कार का मामला अजीबोगरीब मामला है। यू नो, दुनिया में गाड़ियाँ चलती हैं, वो डेप्रिशिएट होती हैं, नॉर्मली 5 years टाइम के अंदर उनकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट होती है, एंड ऑफ द डे उसकी एक रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू रखी जाती है कि जी 10% इसकी स्क्रैप वैल्यू होगी, 90% इट विल बी डेप्रिशिएटेड इन 5 years टाइम, सो 90% डिवाइड बाई 5 वॉट एवर 18 point something जो भी है, एनुअली कॉस्ट इसकी डेप्रिशिएट कर, एंड में स्क्रैप वैल्यू इज 10%। बट यहाँ नहीं होता, रियली गाड़ी की वैल्यू फेस वैल्यू बढ़ रही होती है या मेंटेन रहती है। हाँ, ये एक धोखा है, करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है। मुझे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट याद आया, मेरे वाले साहब इज हियर टुडे, आई थिंक वी बॉट वो गोल्डन वाली एक जो करोला जो थी 88 में ली थी, 82 नहीं, मॉडल 82 था, ली कब थी? 88 फॉर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फॉर 1,80,000, ठीक है, 1,80,000 रुपये में GL सलून लंदन मॉडल 85-86 की इम्पोर्ट थी, बड़ी अपने दौर की बड़ी सुपर डुपर बड़ी थी। 88 में फादर बॉट इट फॉर 190,000। ये गाड़ी 14 साल हमारे घर पे रही, 2 दफ़ा ओवरऑल हुई, यू नो, इंजन भी ओवरऑल, पेंट भी वो, फिर भी बड़ी अच्छी। 2001 आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, 2001 250,000, 13 साल बाद 1,80,000 रुपये की गाड़ी 88 में ली थी, 2001 में बेची 2.5 लाख। अब नंबर्स क्या कहते हैं, प्रॉफिट कमाया है, 70,000 का प्रॉफिट कमाया है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, उसकी वजह ये थी क्योंकि 1,80,000 रुपये की 88 में डॉलर वैल्यू में क्या वैल्यू थी, और 2001 में उसकी डॉलर वैल्यू की क्या, दैट विल टेल यू द रियल स्टोरी। प्रॉफिट कमाया, ब्रेक इवन किया, ये लॉस, समझ रहे? तो एक रिलेटिव टर्म है। अच्छा, यहाँ पे मैं अपना फाइनेंशियल पार्ट आई विल क्विकली ट्राई टू गो थ्रू द कमर्शियल पार्ट, which is also again very, very important. There are 5 things regarding the relevant to the commercial aspect of your business. 5 things. Number 1, business development function. Number 2, marketing function. Number 3, sales function. Number 5, public relations, and number 4, public relations, and number 5, networking. Can any one of you differentiate between business development and marketing and sales? Can someone of you differentiate between marketing and sales? Any idea? So in marketing, you basically devise the strategies जिससे आप customer को attract करते हैं। Good. आप अपने product को इस तरह बनाते हो कि वो ज़्यादा market में penetrate कर सके। और ज़रूरी नहीं होता कि अगर इस तरह का product बना भी लेते हो तो वो ज़्यादा आप उसकी sale भी आगे increase कर रहे होते हो। तो sales department जो होता है basically deals with के हमने वो जो number है उसको किस तरह increase करना है, हमारा customer किस तरह। Quite right, quite right. Marketing is basically the brain. That is the planning part. That is the strategic part of your plan. Marketing is a managerial process. Again, it's not a single activity. It's not a single person. It's a process. It's absolutely a management process. I will explain it later. Sales उसके साथ एक allied function है जहाँ पे आप कस्टमर को रीच आउट कर रहे होते हैं, आप ट्रांजैक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं और रेवेन्यू जनरेट करके ले रहे होते हैं, प्रोडक्ट की ट्रांजैक्शन हो रही होती है, लेन और देन, सम सॉर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इधर फिजिकली हो रही है या डिजिटली हो रही है, दैट इज द सेल्स पार्ट. अगेन इट्स अ प्रोसेस. Marketing is also a process, sales is also a process. Now what about business development? Combination of both.
Business development, it's a very interesting. I am a business development director right now. Although I'm thinking कि मैं अपना designation change कर देता हूँ, क्योंकि मैं I think my team knows कि I'm सिर्फ business development तो शायद मुझे लगता है 10 के 20% ही मैं करता हूँ, बाकी और जो मसले मसाइल हैं उसमें ज़्यादा होती है. तो I'm thinking of changing my own designation. I'm thinking of having director commercial operations, which includes business development, marketing, sales, projects, things like that, public relations. And what is business? दो type के business development. Now this is a very, very interesting topic, designation, a function, but interestingly ये पढ़ाया नहीं जाता है. I've never came across a single business development course in a university, at undergraduate level or MBA. But interestingly इसका कोई very literature ही नहीं मिलता. But every firm has got a business development department. There are people who are doing business development. ये बड़ा एक interesting सी चीज़ है. Text आपको इसमें बहुत कम मिलेगा. Business development ना दो type की होती है. It's not a very defined kind of a role which people have. Business development is about entering into a new market, assessing a market. Like for example, from अगर मैं quality solution की बात करूँ, हमारे business development के initiative इस साल के कौन से हैं? अच्छा, the new segments जो हमने पहले कभी नहीं किए. We are an engineering firm. ठीक है? We are an engineering firm, hardcore, 3D scanner, 3D CAD/CAM software, 3D printers, machinery, this and that. Now what we are trying to do? Digital marketing. That is one part. Now we are venturing into digital, professional digital marketing agency for a very specialized segment, government and institution and tourism development, marketing, which a service which will help to develop marketing. Very specialized. We have never done it before. So we are entering into a new segment, Q for ABCD business. The other type of business development we are trying to do. 3D model of France. नहीं वो तो कर चुके हैं, पहले भी करते थे. हाँ, थोड़ा करते थे, but वो enhance कर रहे हैं, उसमें हम vertically अपने आप को grow करा रहे हैं. Scanning से modeling time की तक लेके जा रहे हैं, छोटे project से बड़े, but we have been doing it. There is something else which we are trying to do. Content creation, media production. This is a completely different set of business lines which we are trying to develop. इसमें मुझे complete a business developer, being a business developer, I have to look at all respects, इसकी commercial side क्या है, इसकी technical side क्या है, इसमें investment क्या है, इसकी technicalities क्या है, इसकी market किस तरह करनी है, इसकी sale कैसे होगी, इसका business क्या होगा, इसका खर्चा कितना होगा. Everything comes into the consideration when you're talking about the business development. The other possible business development is expanding your reach. मैं आज इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूँ. I'm trying to expand my existing business into Middle East region. That is also business development. मैं पाकिस्तान में बैठ के business कर रहा हूँ. I want to expand into North European markets. That is business development as well. So there are two kinds. Number one, regional expansion or a different product line expansion. These are both called business development. So this is step number one in the business, actually, business development. So once you have a business plan with you, you'll be talking about the marketing plan, and then finally you'll be executing that plan once you're doing the sales. What about public relations and networking? Very, very important. For startups especially, अभी तो आप literally गुमनाम हैं, ठीक है? ये जो साद अहमद खान नाइकेड आपको जो opportunity दे रहा है, please believe me, when we started 10-15 years back, मेरे पास ऐसे हमारे पास ये opportunity उस टाइम पे होते इतने अच्छे डेवलपमेंट, आपको कोचिंग सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं,
फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेस मिल रही है काम के लिए, अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। आई एम 101% श्योर जो मैं आज की मेरी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, स्टैंडिंग है, मैं इससे एटलीस्ट 2 टाइम्स आगे होगा। बिलीव पब्लिक रिलेशन देखें, बहुत सारी जगहों पे आपकी जो रिलेशनिंग होती है ना, वो आपके आइस ब्रेकर का काम करती है। सो PR को बड़ा सीरियस लें। इफ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर योरसेल्फ, टाइम निकालना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है एट द राइट टाइम। सोशल गैदरिंग्स में प्लीज जरूर जाएं, काम की जगहों पे, ट्रेड एग्जीबिशंस में ऑर्गेनाइज करें, एग्जीबिशंस में, डिफरेंट इवेंट्स में बॉडीज का पार्ट बने, चेंबर ऑफ कॉमर्स का, डिफरेंट इंजीनियरिंग बॉडीज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बॉडीज, एसोसिएशंस, बी पार्ट ऑफ उनके इवेंट्स अटेंड करें। दैट इज पब्लिक। आपके कॉन्टेक्ट्स डेवलप फॉर नेटवर्किंग। वैसे तो आजकल लिंक्डइन है, यू नो, पर टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई बीन अ लिंक्डइन यूजर फॉर मे बी, मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर यूजर नहीं हूँ, आई थिंक एटलीस्ट 1 साल 2 साल से ज़्यादा यूज करता हूँ। आई हैव अ प्रोफाइल में आज तक भी काम की बात नहीं हुई, ना मैंने किसी काम के बंदे को अप्रोच किया, ना मुझे कभी किसी काम के बंदे ने अप्रोच किया। बोले बसरे कोई जॉब ऑफर आ जाती है जिसमें से नॉर्मली आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब हांगकांग में एक बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर की जरूरत है, मैं क्या करूँगा इस तरह की ऑफर है। गुड, इट्स अ गुड वे टू चेक ऑन समथिंग, बट जो पर्सनल रिलेशन है ना, आज के हमारा जो एक प्रॉब्लम है, साइबर रिलेशंस वर्सेस पर्सनल 1-to-1 रिलेशन। प्लीज माइंड इट, साइबर रिलेशंस की एक बहुत छोटी सी रीच है, लिमिट है। ट्रस्ट का लेवल हमेशा एक फेसबुक फ्रेंड के लेवल का होता है। आई वुड बी वेरी वेरी एम्बेरेस्ड टू मीट समवन, हेलो अस्सलाम वालेकुम, वी आर यू नो वी हैव मेट ईच अदर, वी नो ईच अदर, कौन है जी आप, वी आर फेसबुक फ्रेंड्स। हाउ एम्बेरेसिंग इट लुक्स, you know, you've been liking, disliking or sharing each other's posts for so long, but you've never met the person in front of you. पता नहीं उसने कौन सा फिल्टर लगा के अपनी तस्वीर लगाई होती है, in the real life बंदे completely is a different person at all, you know, by the way he looks or by the way he talks. So networking is very very happening, it's very powerful, it's been so helpful to us. Recently, I just give you my personal example. The place, हमारा ऑफिस, I think last year जून जुलाई से मैं नाइकेट में, फजीलत कब लिया था मैंने ऑफिस, जो सिंगल रूम में था, सितंबर अक्टूबर में या नवंबर। We have our office in the commercial sector here, not in Naikad but the next door building. तो हमारा एक छोटा सा भी थॉट ओके, लेट्स हैव अ फ्रंट ऑफिस हियर इन NSTP एंड आवर मेन ऑफिस वाज इन H13, तो वी हैड अ बिगर स्पेस ओवर देयर। हमने अपना कस्टम बिल्ड टाइप का वहाँ पर बनाया, वकास वाले UIT टावर में, तो वी हैड द 4th फ्लोर। तो इनिशियली आई थॉट कि यार विल हैव अ सेपरेट मार्केटिंग टीम एंड समवन टू लुक आफ्टर दिस ऑफिस एंड पीपल हियर एंड विल कीप द मेन टीम हियर। 4-5-6 महीने तक हमें कोई मिला ही नहीं। ऐसे ही फजीलत लुक्स आफ्टर आवर HR जॉब, तो फजीलत ने आई थिंक किस पे आप पोस्ट करती हैं, वो लिंक्डइन पे, और वो दूसरी वाली क्या है, इंडीड, पोस्ट पे पोस्ट लगा है। 6 महीने से एक सिंपल बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव नहीं मिलता इस्लामाबाद में यार, मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ वाला, 1 साल का सेल्स एक्सपीरियंस हो, ग्रेजुएट हो, 1 साल का मिनिमम किसी किस्म की सेल की, मतलब थोड़ा सा रेलिवेंट हो, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो, 50,000 स्टार्टिंग सैलरी एंड फला 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 फला। नहीं मिला। लेडीज वॉशरूम से लेके प्रेयर रूम तक हमें एड्स अपने लगाते रहते हैं यहाँ पे, अब हमने छोड़ दिया। वी डिडंट फाइंड अ सिंगल वन, नो। अच्छा, anyways, eventually we thought that this is a growing phase. There are a lot of companies coming up. Air Force is bringing a lot of its research and development units to this place.
तो यार ये going to be a good business hub, so we need to be here. हमारी already एक niche छोटी सी है, we are a very specialized technical kind of a firm, you know, so let's be here. So we decided, okay, we requested them कि आप हमें थोड़ी सी बड़ी space दे दें, block दे दें, ताकि हम पूरा अपना system में आए. It took us 4-5 months to actually visit. मैं जनाब यहाँ से इंटेड हुआ हूँ. I was supposed to meet the director of this place, Wing Commander Adil, who looks after the administration part of NASDAQ. And here I find myself a person, Mr. Imran Jatala, director of NICAD, standing right next to me. An old colleague, which I haven't met for a good 12-13 years. Oh यार साहब भाई आप कैसे हैं? जटाला यार तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? गुड यार आपके बाल उड़ गए, पेट बढ़ गया भाई यार, तुम अभी भी छोटे हो पर मोटे हो गए और ज़्यादा. यहाँ क्या कर रहे हो? कम आप किस लिए? मैं वो टर्की डेलीगेशन है, मैंने बुलाया, उनसे मिलना है देयर कंपनी से. अच्छा बस ठीक है, मैं कमांडर साहब उनको छोड़ देंगे, ये मैं इनको ले आऊँगा. ही टुक मी इनसाइड. ओह यार वंडरफुल प्लेस. मैं 50 दफ़ा यहाँ से गुजरता रहता था. आई नेवर बॉडर्ड टू कम इनसाइड, यू नो. एंड वी टॉक टू यार व्हाट्स बीन हैपनिंग, क्या कर रहे थे? यार वी बीन डूइंग दिस. अच्छा यहाँ क्या होना ये तो अच्छा आई कैन डू दिस. ऑन दैट डे मैंने 15 मिलियन रुपीज़ का सिंगल डे बिजनेस किया. 1.5 करोड़ रुपये 10 मिनट में. आइडिया एंड दैट इज जस्ट फॉर चांस. थॉट वाज यार इट्स अ गुड प्लेस टू बी. ठीक है, क्या मुझे ये अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल सकती थी? Not coming to this place? No. Again, just because of being here in this community, being part of this NASDAQ, we came across a defense organization's, another project by a defense organization, HIT. They're trying to create a design and simulation lab, a huge project, a size which was never heard in Pakistan. 25-30 crore रुपए for software only. We have already heard 25-30 crore रुपए की building, aircraft equipment, but 25-30 crore रुपए for software part is a big number. Pakistani markets के साथ. I didn't know about that opportunity. They brought me, have you heard about this thing? I said, no. So please come and have a look. And there is an opportunity for us. I've been waiting for this opportunity for 10 years. Our survival is depending on this opportunity for this small segment business. And I just came to know it from someone else. Despite हम खुद पूरा दिन मारे market में घूम रहे होते. And we have applied for that project and the chances are 50-50. चलो मैं 0 से 50 पे तो आया. I was on 0. अच्छा, तो anyways, most of the time, sales and marketing, they are interdependent on each other. They are correlated with each other, but please, they are two different functions. Understand them, study them as the two different functions. Marketing जो है, that is the brain, whereas sales is the hand, that is the action part. You know? अच्छा, essence क्या है? Key takeaways from marketing marketing is more than just advertising and promotion. It's about connecting with the customer. ठीक है? A marketing strategy sets the direction for all of your products and marketing related activities. Having a marketing strategy helps to keep all your activities on track. Again, marketing is a yearly plan. It's a yearly target. It starts on a date, it's end on a date. Just like a budget, just like a financial document. Marketing plan and sales plans are also time-bound activities and time-bound reports. And then further we are going to talk about the 7 P's in detail. The last point is I will skip over here. And let me just take you around marketing management as a process. Just a quick question. किस-किसने principles of management पढ़ी है? Anyone? Believe me, as soon as you have
you find some time, 10 मिनट every day, 15 मिनट every day. पहला काम प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग पढ़ना शुरू करो. I don't know what's going on in the universities. They're doing this cardinal sins. वो आपको disabled तरीके से यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल. You're completely, not maybe completely, but I would say quite a bit disconnected to the real world you're working. किस ने ERP पढ़ी थी या पढ़ी है या who knows what is ERP? ERP किस को पता है? You know. और आप सारे कंप्यूटर साइंस से कर रहे हो ना? चारों. You know what is ERP? Enterprise Resource Planning. यूनिवर्सिटी में पढ़ाई थी, खुद पढ़ी थी. यूनिवर्सिटी में पढ़ाई थी. Name the best ERPs in the market. SAP. And Oracle. Okay. You must be one of the few luckiest ones. Most of the computer sciences graduate I've came across, they don't know anything about ERPs, or I would say generically database management systems, or management information systems. So it's not been done. Reason? I don't know. Impact क्या है? Oh भाई, this is the biggest IT software consumption in the market. Every single company is an ERP user today or tomorrow. जो भी एक लेवल से बढ़ेगा बिजनेस में, he needs an ERP. So that is one of the biggest market opportunities you have. जो आज के लिए पॉसिबल, जो आपके लिए इधर पैसे पड़े हैं इनको उठा लो नहीं यार. इतना दूर भाग के आप जा रहे हो, डीप वेल खोद रहे हो, तो यहाँ जो अपॉर्चुनिटीज है उसको क्यों नहीं कैच करते? लो हैंगिंग फ्रूट्स या ERP सिस्टम्स, छोटी बड़ी कंपनी सब कुछ. अभी रिसेंटली पॉस आया. क्यों चाहिए पॉस मार्केट में? पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशंस. क्यों? बिलिंग ऑटोमेशन. एंड FDR imposed 17% टैक्स ऑन देम. कि अगर आप GST चार्ज कर रहे हो कस्टमर से, यू हैव टू चार्ज GST फ्रॉम द कस्टमर ऑन रिटेल सेल, और ये पैसा सरकार को जमा करो, और आपका ऑडिट जो होगा दैट विल बी फ्रॉम पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, नॉट फ्रॉम अ बाबू खाता. Everyone had to invest on a pure system, all of the cash and carries. You know? So if you would have been an ERP business, तो आज आपने ये 200, 400, 500 कॉस्ट बेच दिए थे ना. लो हैंगिंग. अच्छा जी, व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग जो है, सबसे पहले मार्केटिंग से बात करने से पहले 1 मिनट पहले थोड़ी सी बिजनेस की ना एक 100 years की ट्रांजेक्शन 3 स्टेप्स में हमने सुनी. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था 150 years बैक, तो जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल यूनिट जब बने थे, तो द कंपनी यूज्ड टू बी प्रोडक्शन ओरिएंटेड कंपनीज. द बिजनेस ओरिएंटेशन वाज, यार मैं जिस चीज़ की फैक्ट्री लगा सकता हूँ वो मेरा काम है. जिसने साबुन बनाने का सीख किया या उसको प्लांट बनाना आ गया, अब उसने साबुन ही बेचना है, जैसा बना सके. कंपटीशन था नहीं, तो लोगों की लाइनें लगी होती थी फैक्ट्री के बाहर, मुझे साबुन दे दो, मुझे आटा दे दो. ऑन योर विल बनाने वाले और कोई नहीं थे. अब एक हैंड मेकिंग प्रोसेस है, कढ़ाई में साबुन बनाने वाला एक फैक्ट्री यूनिलीवर वाले से कैसे कम्पीट करता? ना कॉस्ट में, ना क्वालिटी में, ना ठीक. कंपटीशन बढ़ता गया. 50s, 1950s, 40s, 50s, 60s, मल्टीपल कंपनियों में. एक टीवी वाला था, 10 ने बनाना शुरू कर दी. एक साबुन बनाने वाला था, 50 आ गए. ठीक है. एक गाड़ी बनाने वाली मोट फोटो कंपनी थी, 10 और आ गई. अब प्रोडक्शन तो बढ़ गई. देन द मैन्युफैक्चरर रियलाइज कि यार सिर्फ बनाना गारंटी नहीं है बेचने की, कि बना के अब कस्टमर हमारे दरवाजे पे, फैक्ट्री के दरवाजे पे, दुकान पे नहीं आएगा. वी नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग एल्स टू फाइनली मेक अ ट्रांजेक्शन. तो दे स्टार्टेड टू डेवलप सेल्स टीम. बस्ता उठाओ और कस्टमर के घर पहुंचो, नॉक द डोर्स, डिलीवर इट टू देम. They don't have to come to us. We will deliver the goods to their
doorstep, and that's how the selling concept started. अब क्या हुआ? अरे यार झूठा सच्चा जो बोलते हो बोलो. If you have a good sales team, टाई सूट अच्छा स्मार्ट बंदा, अच्छी बात करने वाला, ये वो, जिसके पास सेल्स टीम है, बनाते आप जो बकवास हो, कोई भी हो, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़. If you are able to sell it, you are the one. ये कॉन्सेप्ट भी 70s 80s के बाद से जब सबने सेल्स टीमें बना ली, ये भी ऑब्सोलीट हो गया. एंड व्हाट केम इन, दैट वाज मार्केटिंग ओरिएंटेड फर्म्स, जो कि आज भी चलता है. There's a balance between technology and marketing oriented. Now, what is marketing oriented firms? Is आप वो कारोबार करो, वो चीज़ बनाओ, वो नहीं जो आप बना सकते हो, वो नहीं जो चीज़ बेच सकते हो. rather than जो कस्टमर मांगता है, जो उसकी विश है, जो उसकी नीड है, जो उसकी ड्रीम को फुलफिल करता है, वो प्रोडक्ट बनाओ. Was iPhone the first smartphone in the market? No. क्या गूगल पहला सर्च इंजन था? No. Absolutely no. गूगल से पहले याहू था, अल्टा विस्टा था, 36.com हुआ करता था. Why गूगल? Why एप्पल? एप्पल क्या फोन बनाने वाली कंपनी? एप्पल ने क्या कभी फोन बनाए थे? No. It was the first venture. Only thing was design. उसका sleek model. The simplest design is the most difficult design to come. You know, a buttonless interface, flat screen, this much thing, good camera, good graphics. Change the entire world. ऐसे तो आप लोग बहुत छोटे हो गए, लॉन्च आज से 14-15 साल पहले, ठीक है. I have seen mile-long lines in London when Apple was launched. लोग 3-3 दिन पहले एप्पल के स्टोर से पहले रोडों पे सोते थे to grab the first 100 ones or 200 ones. I've seen it with my own eyes. iPod का नया मॉडल रिलीज हो रहा है, वो फुटपाथ पे टेंट लगा के लोग सो रहे हैं. वो हॉलैंड में रिलीज है ना, वो 3 दिन बाद है, तो वहाँ से लोग हॉलैंड से लंदन आए हुए हैं, या 3 दिन पहले लेके घर चले जाएंगे. This was the craze. This is something which a product or a design can induce in you. अजीब सा बिहेवियर नहीं है. आप ग्राटों की जलेबी लेने के लिए सो गए रात में लोग, या सेवर के प्लॉट से इतनी मोहब्बत है किसी को है? जिले जो आजकल अपना फेमस है, लॉरी जिला क्या कहते हैं, इसका टैगलाइन क्या? जिले जिला इतने कर गया ठीक है, पंजाबी की कोट है वो, जिला इतने कर गया ठीक. और एक और भी बड़ी फेमस है, नहीं सुना? जिले नहीं हम आप यस, उससे भी रिलेटेड एक और है, जिला एक नशा है. यार व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी. बाप मुझे मजा आ गया. मैंने कल जिस बंदे ने इसकी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, मैंने इत्तेफाकन कल उसका डिटेल इंटरव्यू और मजा आ गया. जिस बंदे जो उसकी वीडियो कवरेज करता है, ये जो व्लॉगर है, जो फूड ब्लॉगर है, जो उसकी जिले की कवरेज करता है, इसने ये कोई 5 साल से लगा हुआ था रेडियो की, रेस्टोरेंटों की जगह बनाने में. नोबडी न्यू. तो यार कभी कोई 50 व्यू लग जाते थे वीडियो पे, कभी 100 लग जाते थे, यार कुछ हो ही नहीं रहा था. इवेंचुअली इसने जिले ने इसको कहीं से पकड़ा और इन दोनों ने मिलकर एक अपनी बनाई. जिले की पता है फर्स्ट वीडियो इसने जो बनाई है, जिला एक नशा है, कितने व्यूज है उसके? 10 मिलियन पहली वाली के. इट्स जिला और वीडियो दोनों ओवरनाइट शाहरुख खान बन गए. अब लुक एट द क्रेज यार. लाहौर क्या सिर्फ जिला ही है? बाखुदा मेरा दिल करता है यार मैं किसी दिन जाऊं और जिले के बाद जाके नान छोले या वो कोफ्ते जो बनाते हैं वो खाऊं. बट द ओनली थिंग विच कीप्स मी अवे, या तो मेरा स्केड्यूल, और दूसरी बात ये कि मुझे क्राउड फोबिया है. मैं जहाँ लाइन देखता हूँ ना, वो मेरे लिए नो गो इज इतना इम्पोर्टेंट काम. अदरवाइज आई वुड लाइक टू गो एंड ट्राई दैट. आई डोंट नो कैसा है, पर एक
विश क्रिएट होगी भाई जिले के बाद जाने हैं आमिर सर का फूड, ये कैसे मैजिक क्रिएट हुआ। और दूसरा उसका जो ऑपोजिट एंटीथीसिस है डॉक्टर अफान, यू नो नाउ देयर इज अ साइबर टैग वॉर गोइंग ऑन, वो एक साइड से उसके भी बड़ी फैन फॉलोइंग है डॉक्टर अफान, एंड ही इज कि यार ये हेल्दी डाइट है, ये जिला नशा नहीं, ये जहर है, ये अनहेल्दी फूड को प्रमोट है। येस्टरडे जो आशिर जो उसकी वीडियोस बनाता है मार्केटिंग की, और इसका और डॉक्टर अफान, ये डॉक्टर अफान का इसका वीडियो जो वीलॉगर है वो डॉक्टर अफान उसका फिटनेस कंसल्टेंट है। तो ही वाज इंटरव्यूइंग विद दिस गाय, बोलते हैं तुम्हें कभी जिले के पास खुद खाया फिर नहीं, तुम वीलॉगिंग डेली करते हो, किसी रेस्टोरेंट में जाके कभी फजे के पाए खाते हो, कभी नारी खाने जाते हो। हाँ मैं बोलते हैं जो पहले दिन उस्ताद ने सिखाया था एक ही वाला चटनी, मैं नारी पे खड़े होकर वहां खाता हूँ जिधर हालत होती है, मैं उससे 1 किलोमीटर के अंदर नहीं खाना चाहता। अब वो दुनिया को खिला रहा है जिले को, खुद नहीं खाता। अच्छा, अब कमेंट सेक्शन भी दिलचस्प होता है। एक बंदी ने बड़ी खूबसूरत उसमें कमेंट लिखा, बता जिला इज अ हीरो, ही नोज द मार्केट। किसी ने कहा यार तो पुराना घी बनाता है, पुराना तेल लगाता है, तो डॉक्टर अफानी ने टर्म उसने कोई की थी, यार ये जो जिला है ना, ये इसके दादे ने जो तेल डाला था तो पोता भी उसी में पकौड़े तोड़ता है। तो वुड यू लाइक टू ईट इन दैट ऑयल समथिंग विच इज सो ओल्ड। वो जिले को ही पता चला, उसने कहा ऐसी की तैसी, वो अब ताजे घी देसी घी के डब्बे खोलता है, मुझे इतनी मोहब्बत ना पा जो है, दैट इज दिस इज द स्टोरी बिहाइंड इट। या उसने लाइव डेमो दिखाना शुरू किया कि यार मैं फ्रेश और देसी घी में डाल रहा था बिना झिझक, एक पूरे 20-20 kg के 10 जो मैं कल्टी कर देता हूँ, तो मैं पुराना ऑयल नहीं यूज। उसने अपने ऊपर से एक लेवल क्रॉस कर दिया जो एक अटैक उसके ऊपर आया। इंटरेस्टिंग है नॉट, ठीक है जी। इसी तरह उसने 1 by 1 डॉक्टर अफान ने कहा यार तू ये काम कर यार, ये बड़ा हेल्दी, एयर फ्रायर यूज करो। ही ब्रॉट इन एयर फ्रायर, जिला इज ऑफरिंग एयर फ्राइड सी कबाब्स एट हिज ढाबा। और बोलता है डॉक्टर साहब ऐप ही दसो कि इन्हें एक टाइम में नहीं 8-10 से आंदे इस पूरी पलटन का मैं क्या करूँ, बट ही इज गॉट एन एयर फ्राइड देयर। इफ यू वांट टू हैव एन एयर फ्राइड कबाब फ्रॉम जिला, ही इज गॉट एयर फ्राइड। इसी तरह उसने कहा ओके, डॉक्टर अफान से यार ये अनहेल्दी दूसरे ऑयल में तो उसने ऑलिव ऑयल डालना शुरू कर दिया छोलों में। नाउ यू सी वो अपनी कॉर्पोरेट क्रिटिसिज्म को कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए वो घी, देसी घी डाल रहा है, ऑलिव ऑयल डाल रहा है, क्रीमें डाल रहा है, एयर फ्रायर ले आया, ऑलिव ऑयल डाल रहा है, यू नो प्राइस रिड्यूस कर रहा है। डील ही निकालता है भाई दिल्ली की, 200 रुपये में इतनी एक प्लेट ये छोले मोले कोफ्ते वोफ्ते और रोटी, डेली की डील होती है। ही ब्रिंग्स a surprise every day. He hasn't got a fixed menu. He comes with a surprise. So it's every day it's a new experience for his customers. आज जिले ने क्या पकाया होगा, तो वो अपनी पत्नी के पीछे अपने फैन फॉलोअर्स को लेता है। जिला भी कमा रहे हैं, उसके व्लॉगर्स भी कमा रहे हैं, डॉक्टर अफान भी कमा रहे हैं। सो डिजिटल दुनिया में इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स अ वेरी यू नो एक अजीबोगरीब दुनिया बन गई। देयर सो मेनी वेज टू अर्न मनी डिजिटली, और लोगों को पता नहीं होता कि आप क्या कमा रहे हैं। बात पॉलिटिकल हो जाएगी, बट जस्ट टेक इट लेट। वी नो आजकल पीटीआई सबसे पॉपुलर, आई एम श्योर बहुत सारे लोग सपोर्टर होंगे, बहुत सारे लोग नहीं होंगे, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज जनरल ऑब्जर्वेशन से PTI and Imran Khan is the most popular political party and the political leader currently in Pakistan. ऐसे ही सही है गलत है, हर एक की अपनी अपनी एक ओपिनियन, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर ये है। अब आपके ख्याल में इमरान रियाज खान को और तुम्हारा फेवरेट क्या नाम है, बोल वाला जो छोटू है, सैयद शाह, और वो एक और भी जो छोटा जान सदीक जान, क्या ये वाकई इमरान के फैन है, या इस जैसे मल्टीप्लाई बाय 1000 ये आइडियोलॉजी है?
डू यू नो ये हुआ क्या? पीटीआई एंड इमरान या जो भी उसके पीछे इस दे हैव क्रिएटेड अ डिजिटल इकोनॉमी अराउंड अ हीरो, a digital fan following, a digital platform for people to earn. अब ABC इसलिए नहीं जाता कि वो उससे बहुत ही कोई सच्चा आशिक है खान साहब का, उसको ये पता है कि मैं इस जलसे में जाके जब ये प्रो इमरान पे ट्वीट करूँगा तो ये जो इतने मिलियन व्यूअर्स हैं ना मेरे ट्विटर के पोस्ट की, मेरी वर्थ इतनी बड़ी है, तो दे आर नॉट टेकिंग डायरेक्टली मनी फ्रॉम PTI और समवन, ये उसका जो उसने एक अपना इकोनॉमिक इकोसिस्टम, डिजिटल इकोसिस्टम कितना बड़ा डेवलप किया है, ये उसके स्टेक होल्डर्स हैं। टैगिंग आई कैन स्पॉट ऑन टेल कि यार ये इसने जो भी उर्दू में कमेंट लिखा है ना, ये वाला फलाना, या ये 10 इसने जो दास्तान लिखी है, ये असल में इसको किसी ने मीडिया सेल से आगे फॉरवर्ड की हुई है, अब ये पर पोस्ट इतने पैसे इसको मिल रहे हैं। या किसको पड़ी हुई होती है रात को वो नवाज शरीफ की चाहत में जो ना वो एक पोस्टर डिजाइन करे, ग्राफिक डिजाइन का, या नाम की, इट्स ऑल अबाउट मनी। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड इट्स अ पॉलिटिकल इकोनॉमी व्हिच इज थ्राइविंग दीस डेज। सच झूठ क्या है? ये कौन है? देयर इज नथिंग सच, देयर इज नथिंग झूठ, वो डेली का एक सच है, डेली का एक झूठ है। दिस इज डिजिटल वर्ल्ड, ठीक है जी। टारगेट ऑडियंस, मेरे टीचर ने मुझे एक आज से 24 साल पहले एक हमारे प्रोफेसर थे, द पर्सन हु टॉट मी मार्केटिंग, एक खूबसूरत उसने बात, मार्केटिंग एंड सेल्स एट द स्पॉट सीखनी है ना तो फकीर से सीखो। फकीर, व्हाट वुड अ फकीर टेल अस? उनकी बात आज से 23 साल पहले भी सच थी, और उनकी बात आज से कोई few months back अभी वापस से मैंने उसी बात का 24 साल बाद फिर से एक नया लेसन सीखा था। ठीक, वो लेसन क्या था? मैं जब यूनिवर्सिटी में था, फ्रेश ग्रेजुएट हो रहा था, तो 2001-2 में मर्सिडीज एक ड्रीम कार होती थी, आई वांटेड मर्सिडीज, और अबा ने पैसे दिए थे, पहले एक CD70 के फिर एक एफेक्स थे, और लेनी ख्वाहिश मर्सिडीज थी। So there was a big gap. Ultimately, it just happened. मेरे पास after 2007-8 बड़ी गाड़ियाँ आती रही, चेंज होती रही, बड़ी अच्छी मज़ेदार गाड़ियाँ एंजॉय की, Mark II कभी चलाई, कभी इंटरकूलर चलाई, कभी सिविक एंजॉय की, दिस एंड दैट। बट वो जो एक अनफुलफिल्ड विश जो थी मर्सिडीज की, वो नहीं पूरी हुई। इत्तेफाकन एक दिन मैं एक गाड़ी मैंने लेनी थी एक रीजनेबल प्राइस पे एंड ऑन अ डेफर्ड पेमेंट, पैसे भी बाद देने से मुझे अपना फेवरेट मॉडल मर्सिडीज का मिल गया, क्योंकि मेरी प्राइस रेंज में भी आ रहा था, मुझे पैसे भी नहीं देने थे भी पूरे। मैंने गाड़ी ली, बिलीव मी, 1 महीने तक मुझे दिल करता था मैं अपनी गाड़ी में सोऊं, और मैं सुबह उठ के उसको देखता भी था और शाम में भी देखता था कोई स्क्रैच तो नहीं लगा, ड्राइवर ने सही से चमकाई है कि नहीं चमकाई। तनवीर था ना अपना ड्राइवर उन दिनों में। तो एक दो महीने बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने किया, कुछ छोटी है यार, इसका जो बैक साइड कैबिन है ना C क्लास का ना छोटा होता है, आई थिंक E ले लूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो 1 महीने बाद मेरी आहिस्ता आहिस्ता जो मेरा क्रेज था इतने सालों का, वो आहिस्ता 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 लेवल जो था वो डाउन होते लगे, इवेंचुअली इट बिकम अ नॉर्मल कार। नॉर्मली मेरा घर पुलिस ऑडिशन में, तो वी जस्ट ड्राइव डाउन टू कोराल चौक, डू अ राइट टर्न, आधा पौना घंटा डेली ट्रैफिक में हम जलील होते हैं, और एटलीस्ट 100 फकीर और 50-60 ट्रांसजेंडर्स को क्रॉस करते हुए हम एवरी डे घर पहुँचते हैं। तो व्हाट माई थ्योरी इज कि तनवीर जो मेरा ड्राइवर भी है, ऑफिस बॉय भी है, मेरा पार्टनर भी है, सो मेनी थिंग्स, ही ड्राइव इन द फ्रंट और मैं बैक खींचे करके मैं पीछे छुप जाऊँ। तो जैसे ही यहाँ ट्रैफिक ब्लॉक स्टार्ट होता है, तो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि ये जो ट्रांसजेंडर्स जहाँ पे होते हैं और जो बेचने वाले होते हैं कुंजू वाले, इन्होंने सब ने इनकी अपनी ना एक मैनेजमेंट क्रिएट की हुई हो, तो ये हर लेन में फॉलो करते हैं,
एक लेन में बंदा जो आगे बंदी या बंदा वोल्वर जो चलता है वो अपने लेफ्ट साइड वाली गाड़ी को नॉक करेगा, राइट वाली को नहीं करेगा। नेक्स्ट लेन वाला भी इसी तरह वॉक करता हुआ आगे चलेगा, लेफ्ट लेन वाले को नॉक करेगा, राइट वाले को नहीं करेगा। सो दे डू नॉट ट्रांस एंड इनटू अदर्स। नॉर्मल प्रैक्टिस तो मैं पीछे छुप जाता हूँ, अगर उनको नजर आ जाऊँ तो वो फिर छोड़ते नहीं हैं, कुछ ना कुछ दिल्ली पैसे फिर निकालने पड़ते हैं। वो सीरीज है, बड़ा ही तंग करते हैं। माई ड्राइवर चला गया छुट्टी पे थोड़े दिनों के लिए, तो आई वाज ड्राइविंग बैक माई सेल्फ। जैसे ही मैं पहुंचा ना, उसने जैसे ही स्पॉट किया, तनवीर जब भी कभी ड्राइव कर रहा होता था, दे वुड नेवर नॉट द कार। आई डोंट नो व्हाई। एक लोग देखेंगे सीधा, लोग देखिए सीधा, हमारी गाड़ी को कभी पूछते ही नहीं थे, फकीर भी नहीं और ट्रांसजेंडर। उसे नाम ड्राइविंग माई सेल्फ, वही ट्रांसजेंडर आया, उसने मुझे देखा और मैंने गलती से शीशा नीचे किया हुआ था। मैंने कहा यार आज तो उसको 10-15 मैं आई ऑलरेडी स्टार्टेड टू लुकिंग फॉर अ चेंज के कहीं पर समझ। तो यू नो मैंने उसको ही फेल्ट कि मैं उसको इग्नोर करूँगा। इसी 3 सेकंड में पता उसका पहला वैल्यू प्रपोजिशन क्या था? अल्लाह मियाँ भाई को नया मॉडल मर्सिडीज का दे दे। न्यू कि ये 2007 मॉडल है और ये टाई सूट पहन के बंदा जा रहा है, इसको जो है ना इसकी विश होती है कि अब ये मॉडल पुराना हो गया, 10-12-13 साल हो गया। इसने 1 सेकंड के अंदर मेरा जो विश नोट था उसने पहले एक स्ट्रिंग टर्न कर दी। अब मैं 10 के बजाय सोचा उसको 50 देने पड़ेंगे। एंड ऑलरेडी मैं देख, अब मैं अभी तक मैंने एक्शन नहीं, ट्रैफिक जाम है, गाड़ी फंसी, मैं स्लो आगे चलूंगा, मेरे साथ चल। इसने जैसे ही पहला शॉट फायर किया एंड इसने देखा कि मैंने रिएक्ट किया कि नहीं, इसने इसके ऊपर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। वो क्या? अल्लाह मियाँ भाई का वेट भी बहुत बड़ा हो गया, इनकी पेट कम हो जाए, भाई स्मार्ट हो जाए। Can you imagine? He was able to judge me in 5 seconds. इस बंदे की क्या विश, पॉसिबल विश हो सकती। थोड़ी देर बाद मैंने कहा इसको पैसे देता है, गिव 100 रुपीज। मैंने कहा थोड़ी देर में बोलेगा कि अल्लाह मियाँ बाल भी आपके उगा और क्या चाहिए दुनिया में। वेस्ट लाइन कम हो, बाल पूरी हो, नई गाड़ी का मॉडल मर्सिडीज का, व्हाट एल्स, लाइफ इज कंप्लीट। और क्या चाहिए? आप खुद सोचें, दिस इज अ ब्यूटिफुल पिच। ऐसे ही हाउ मच स्ट्रगल वी डू टू कम अप विद द राइट पिच कि यार मेरा प्रोडक्ट ये भाई सॉलिडवर्क्स ये करता है, आसान है, 2 बस बनाना है, धमकाना है। 5-5 घंटे की कंटिन्यूस प्रेजेंटेशन कस्टमर को देनी पड़ती है सिर्फ अपनी वैल्यू प्रपोजिशन समझाने के लिए कि भाई दिस व्हाट वी आर ऑफरिंग, ये है, पैसे दो, हमसे खरीदो। डिजिटल, अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी आई विल टेल यू। हमारा एक कस्टमर है, आवर सर्विस इज डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन थ्रू 3D स्कैनिंग ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग्स इन आउटडोर। मजेदार चीज क्या है, यू स्कैन दिस बिल्डिंग, इस स्पेसिफिक बिल्डिंग का भी हमने बनाया हुआ है कि वर्चुअल टूर आप भी कर सकते हैं। तो यू कैन टेक द लाइव मेजरमेंट्स विदिन व्हाइल रिमेनिंग इनसाइड द रियल इमेज, यू नो, और इट्स वेरी एक्यूरेट, 1 mm की एक्यूरेसी के साथ होता है। तो वी वर ट्राइंग टू सेल दिस टू अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आई वोंट नेम इट, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स फॉर देयर रिलीजियस ट्रायंगल्स। 1 साल हमने धक्के खाए, बड़ी दफा उनको समझाने की कोशिश की, ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, ज़लज़ला आ जाएगा, गिर जाएगी बिल्डिंग, कहाँ से वापस बनाओगे, यू नो, क्रैक हो गया, ये हो गया, फिर क्या करोगे? ठेकेदार आपको चीट कर देगा, गलत बिल दे देगा, ये दोनों साइड तो इतनी दूर है, आप थोड़ी जाते हैं गुजाना शकरगढ़, नारोवाल, लाहौर से। यू विल हैव एक्चुअल लाइव मेजरमेंट। कब्जा हो गया तो व्हाट विल यू क्लेम कि आपकी प्रॉपर्टी क्या थी, यू नो, कोर्ट में एविडेंस क्या आप शो करेंगे? कुछ नहीं होगा, बड़ी डिफिकल्ट। इवेंचुअली क्या चीज बिकी? अब वॉक थ्रू वीडियो, सेल्फ जनरेटेड वॉक थ्रू फ्लाई थ्रू वीडियो, ऐसी कैमरा यूं करके घूमता है और 10 मिनट की वीडियो है
और कि यार ये छोड़े, दिस इज व्हाट वी डू, जिसमें हमारा 1% का कोई काम नहीं है। उसको अपनी तरफ से एफर्ट करनी पड़ेगी, यार चलो इसमें कोई वॉइस ओवर डाल देते हैं, इसमें कोई स्क्रिप्ट या स्टोरी लिख के डाल देते हैं, और ये वो 5 मिलियन के काम से बढ़ता वो 20 मिलियन से प्लस कर गया कॉन्ट्रैक्ट। जो मैं ऐसे लोगों को बेचने गया था, या हम जो कोशिश करते थे, वो प्रोडक्ट लिए ही नहीं, वो कुछ और हो गया। यू नो दैट इज लुक एट क्यों। उसकी वजह ये कि उसने अगर वो हमसे ये 3D स्कैनिंग करा के डिजिटलाइजेशन अपनी साइट की कर रहे तो उनका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फंस जाता, हम उससे दोनों में नहीं कर सकता था। इतनी बड़ी एक्टिविटी करने के बाद आफ्टर ऑल वो डाटा कहाँ जाना था, एक कंप्यूटर में, किसने देखना था? वीडियो बन के वेबसाइट लगी, चेयरमैन की वाह वाह होगी, अगली प्रमोशन, अपना अगला पोस्ट बड़ा हो गया, इंस्टीट्यूशन के में अपने क्रेडिट पे कुछ काम दिखाने लगे, यार हमारा यूट्यूब चैनल भी है, हमारे वीडियोस भी हैं, हमारी डॉक्यूमेंट, माइलेज, पर्सनल। सो दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग। मार्केटिंग में the shortest possible format is, I'll just try to wrap it up in just 5 minutes. Okay, identify your customer, build your strategy, value around that target market, identify your target market correctly. एक और पर्सन, I'm sorry, please bear with me, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा था, मुझे पता है रोजा भी मैंने कर दिया, बट bear। एक खूबसूरत एग्जाम्पल फेलियर किया। Back in 2010 and 11, I wanted to start my own business, and we had some pharmaceutical business, a family-run business. My father in industry, we were having some troubles with that business, so we were thinking of coming up with something else. So, Papa offered to me कि यार एक interesting product है, so I can help you technically and through manufacturing purpose, and you do the marketing and sales, and let's start. वो प्रोडक्ट क्या था? आई एम टॉकिंग अबाउट 2010 में। दैट वाज अ हैंड सैनिटाइजर एंड अ हर्बल माउथ वॉश, मसवाक से एक्सट्रैक्ट। द मेन थिंग वाज अ हैंड सैनिटाइजर। नाउ थिंक अबाउट यूजिंग अ हैंड सैनिटाइजर बैक इन 2010। किसी को पता ही नहीं, हमने उसको ब्रांड किया, उसका अपना ब्रांड नेम रखा, ज़ेलो वाज अ ब्रांड। मुझे ऐसी अचानक एक आमद हुई कि यार ज़ेलो नाम है, ZELO, ज़ेलो। वी गॉट इट रजिस्टर्ड, उसकी डिज़ाइनिंग कराई, बॉटलिंग करवाई, बॉटलिंग ढूंढी, बॉटल हैं, उसकी पैकेजिंग की, रैपिंग की, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में काफ़ी शुरू में थोड़ी सी डिफिकल्टी थी, उसका फ्रेगनेंस सेट नहीं हो पा रहा था। तो इसमें बेस IP ये अल्कोहल में ये बेसिक में बनता है, जो हैंड सैनिटाइजर आप जो हम सब अब जो यूज़ करते हैं, इसका जो बेस जो रॉ मटेरियल है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल IP, उसकी अपनी नेचुरल बहुत ही जो स्मेल है ना, दैट इज वेरी अनप्लीजेंट, वो सेट नहीं हो पा रही थी। तो कभी रोज़ ट्राई कर रहे थे परफ्यूम, कभी कर इवेंचुअली वो लेमन परफ्यूम के साथ ना सेट हो। तो वी स्टार्टेड। अच्छा, अब हमने एक डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढा, उसमें वो ऑलरेडी कुछ हैंड वॉशेज और मिशनरीज के था। हमने उसकी सेल्स टीम को बड़ा एजुकेट करना पड़ा, उनकी छोटी छोटी सी ओरिएंटेशन वर्कशॉप करनी पड़ती थी कि यार व्हाट इज़ हैंड सैनिटाइजर, ये बायोलॉजिकली ये रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस ये है क्या, हाउ इट टेक्स अवे द बैक्टीरिया फ्रॉम योर सरफेस एंड दिस एंड दैट। और उन्होंने मुख्तलिफ कैशिंग कैरीज पे इधर यूँ इस्तेमाल हो रिटेल साइड पे। वी ट्राइड अ लेवल बेस्ट। मैं रातों को जागता था, ट्राई करता था, सुबह जॉब ऑफिस में जाता था, रातों में इस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ 12-12, 2-2 बजे तक बैठ के सर खपाता था। कभी इसके बाद जाके कन्विंस करें, कभी इधर सेल्स एक्टिविटी करे, कभी वहाँ एक्टिविटी करें। वीकेंड पे लाहौर जाता था इसकी बॉटलिंग वगैरह की अरेंजमेंट वगैरह करने की थी। और डिस्पाइट ऑफ एवरी एफर्ट वो नहीं बिकता था, नहीं बिकता था। मैं चुप के जाता था दुकानों पे देखने की कोई बोतल बिकी कि नहीं बिकती। थोड़ा सा और कन्विंसिंग हमें कहाँ से मिली कि यार इट कैन वर्क। उन्हीं दिनों लाइव बॉय ने अपना हैंड सैनिटाइजर भी लॉन्च किया, कूल ने भी किया। कूल ने कोई शारजा कप, एशिया कप था, वो उन्होंने स्पॉन्सर भी किया।
तो हमें लगा कि यार लगता है कि अवेयरनेस कैंपेन अच्छी कुछ चलाएंगे तो इनके साथ साथ हमारा भी कुछ ना कुछ पिकना शुरू हुआ। अल्टीमेटली 4-6 महीने बाद जो देखा लाइफ वो ऐसा ऐसा मार्केट से शॉर्ट खत्म, रेट डिस्कंटिन्यूड, कूल गई। एंड जहाँ छोटी मोटी जगहों में हम रहते थे, हमारे आहिस्ता आहिस्ता हमें भी सेल ही नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे सेल्समैन का जाने का खर्चा ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूटर का खर्चा ज़्यादा होता था। अब एक बोतल के लिए जारी होते वो कहाँ जाता। इवेंचुअली 1 साल बाद, 1.25 साल बाद हमें इसको वाइंड अप करना पड़ा। I would say one of the biggest strategic mistake I made in my career. मेरे से assessment गलत हो गई थी। I took the wrong market as my initial target. मुझे अपने resources market में product की awareness को मैंने judge गलत किया था। It was a too tall a task to convince a mass level people कि वो एक soap को use करने के बजाय एक sanitizer, एक alcohol based लिक्विड को यूज करना शुरू करें अपने हाथ में। इट वॉज टू डिफिकल्ट अ टास्क। शायद 50-60 करोड़ रुपए की एक मार्केटिंग कैंपेन बैक टू बैक चैनल्स पे, अखबार पे, एग्जीबिशन में आप चलाते तो हो सकता है एक इस तरह का मैजिक क्रिएट किया जा सकता है, इतनी अवेयरनेस क्रिएट की जाती थी। बट ऑब्वियसली 50-60 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाने के लिए आपको मल्टीप्लाई बाई 20 टाइम्स आपको प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी चाहिए कि वो गिलगित में भी, खुंजरात पे भी मिलता हुआ और वो गवादर में भी दुकान पे आपको मिलता है। यू नो दैट इज नॉट पॉसिबल। मिस्टेक का हूँ मुझसे, दिस इज व्हाट आई रियलाइज। अपने रिसोर्सेज को देखते हुए और प्रोडक्ट की अवेयरनेस लेवल को, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो मैं आपको कह रहा था, वी मिस्ड आउट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर स्लाइड्स, बट मैंने वर्बली सोचा था मैं एक्सप्लेन करूंगा कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो उसका ग्रोथ सेगमेंट होता है ना, every product goes through 3 different phases: initiation, growth, maturity, decline. Every product. And ये decline और maturity का जो level है ना, जहाँ पे sales उसकी drop down हो रही होती, ये एक बड़ा important part होता है कि इधर से कहाँ आपने उसको manage किया। Anyway, अब growth stage पे क्या हुआ, मैंने अगर एक सही काम अगर शायद किया होता तो things would have been different for us. We had 5-6 guys in Rawalpindi as a sales team, और दुकानें थी हजारों। We went for the retail side. If we would have gone for institutional sales, 500 ml के बजाय 3 पैकेट्स, 500 ml, 250 ml and 50 ml पॉकेट साइज, हम इसके बजाय लीटर पैक में करके इसको इंस्टीट्यूशनल सेल्स करते फॉर हॉस्पिटल्स, फॉर बैंक्स एंड फॉर other institutions like clinics and wards and जितना, तो मैं 5 टीम से कम से कम महीने के 50+ क्लाइंट्स को कवर कर सकता। और वो इंस्टीट्यूशनल सेल्स जो थी वो हमें इतना दे देती, सस्टेनेबिलिटी देती कि हम आहिस्ता आहिस्ता सस्टेन रहते, बिजनेस में रेलिवेंट रहते और आहिस्ता आहिस्ता रिटेल सेगमेंट्स को अपने डेवलप करते जाते। कि बैंक में यूज़ करते हुए किसी को देखता पूछता है यार कैशियर नोट साफ गिनती करने के बाद, यार ये क्या आपने हाथ में लगाया, यार ये नया टाइप का सोप है, इसे हाथ साफ हो जाता है, ये खुद ब खुद हो जाता है साबुन। अच्छा कहाँ से मिलता है? वर्ड ऑफ माउथ, यहाँ से मिलता है। आहिस्ता आहिस्ता स्लोली रिटेल मार्केट। We missed out on a very important segment. Yeah, it was not supposed to be in a consumer market का product नहीं था, retail में उस टाइम पे नहीं करना था। It was a institutional product for that time. Factories में, food factories में, यहाँ वहाँ clinics में हो सकता था। And if you would have done it and survived up to 2020 COVID, 10 साल पहले के लोगों के मुझे रात को 2-2 बजे फोन आते, यार आपको हैंड सैनिटाइजर बनाना चाहिए, अब भी बनाती तो ख्वाब था जो कि चिकनाचूर हो चुका है। You know, can you imagine a company who was into hand sanitizer manufacturing since 2010 and they got an opportunity of being a hand sanitizer manufacturer, the only hand sanitizer manufacturer in Pakistan in 2020. उफ, जहाज तो मैंने नहीं लेना था, बाखुदा। इतना बड़ा मिस,
it could have been a life changing decision. फर्क क्या था? सेल्स वाले को पंजाब कैश एंड कैरी के बजाय अली मेडिकल भेजना था। 250 ml की बॉटल की बजाय 1 लीटर की बड़ी पैकिंग निकालनी। सिलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केट। ठीक है, ये वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में करने होते हैं इन मार्केट। प्रोडक्ट क्या, प्रोडक्ट फीचर्स क्या हैं, ऐप के फीचर्स क्या हैं, किस तरह होंगे, रंग क्या होगा, काला होगा, नीला होगा, पीला होगा, बटन्स क्या लगे होंगे, वेबसाइट क्या है, क्या प्राइस होगी। टॉपिक थोड़ा सा लंबा है। जनरली 2 प्राइसिंग मॉडल, प्रीमियम प्राइसिंग, पेनिट्रेटिव। प्रीमियम चार्ज करो, डिपेंडिंग मार्केट को देख के चार्ज करो। प्रीमियम चार्ज करें, महंगी चीज है, सस्ती नहीं है। इफ यू कैन अफोर्ड इट, कम टू मी। इफ यू कैन नॉट अफोर्ड इट, आई गॉट समवन एल्स टू सेल इट। छोटा प्राइसिंग मॉडल, पेनिट्रेटिव प्राइस मॉडल, कम प्राइसिंग। छोटा प्राइस मॉडल, ज्यादा वॉल्यूम में काम करता है। यही 2 प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज होती है। प्रमोशन, नाउ दिस इज अनदर सीरियस प्रॉब्लम। डिजिटल मार्केटिंग को लोग मार्केटिंग समझते हैं। मिसकंसेप्शन नंबर 1, ये जो प्रमोशन है ना, प्रमोशन के अंदर भी देयर आर एटलीस्ट 7-8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रमोशन। एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, इसके अलावा ट्रेड एग्जीबिशन, ट्रेड शोज, प्रिंट मार्केटिंग, ब्रोशर्स, दिस एंड दैट, फलाना। एंड डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ देम। मार्केटिंग के अंदर जो प्रमोशन है ना, ये एक पूरी स्ट्रेटेजी है। एंड digital marketing is one of the mediums you have available. SEO is SEO is part of it. So please, digital marketing को marketing नहीं समझना. It's component of promotion, and promotion is part of it. Place, कहाँ बेचना है? The mistake I did. ठीक है? अच्छा, ये physical product के साथ तो ये पहले 4 ही associated होते हैं. But when it comes to service, we have additional 3 P's, which is people, packaging and process. People क्यों मैटर करते हैं? सर्विस की बात है ना, जिसने डिलीवर करनी है ना, वो बड़ा, जिसके हाथ से काम होना बड़ा मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, इधर जो बच्चियां हमारी बैठी हुई हैं, कभी कभी सलून जाती हैं, अब जो हेयर ड्रेसर है, मेकअप कराने वाली आर्टिस्ट है, उसकी आउटलुक कितना मैटर करती है, की बातें कितना आपके लिए मैटर, यू नो, अच्छा करके बुरी करके बात की बात है। फिलहाल उसने आपको सेटिस्फाई करके भेजना कि यू आर लुकिंग गुड, जबरदस्त, आप जैसी दुल्हन मैंने कभी बनाई नहीं, आपकी तस्वीर ले लूँ मैं, आए है माशाल्लाह, अल्लाह प्यार करे, ये मेक यू हैप्पी, यू नो। होटल जाए, वेटर आपका सर्विस प्रोवाइडर है खाने का, होटल के जो वेटर का जो बिहेवियर होता है, दैट आपका पहला गुड एक्सपीरियंस वहां से स्टार्ट होता है, इफ द फूड इज गुड और बैड। एंड देन द प्रोसेसेस, सेल्स, ऑलरेडी मैंने बहुत सारी बातें की हैं। दिस इज अ सेल्स प्रोसेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज इस प्रोसेस को, विच स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोस्पेक्टिंग, qualifications, demonstrations, evaluations, negotiations and closing. This is for business to business segment, not for retail. इस प्रोसेस को प्लीज समझ लीजिएगा। और ये जो परचेज प्रोसेस, जो ऑर्गेनाइजेशन और कंज्यूमर, जो कस्टमर एंड जो कंज्यूमर है ना, चाहे वो इंडिविजुअल है मेरी और आपकी तरह या एक कंपनी है, इन दोनों का जो परचेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना, ये चीज खरीदते कैसे हैं, इनका थिंकिंग पैटर्न क्या है, इनकी मोटिवेशन क्या होती है। बच्चे के इन्फेंट बेबी का जो दूध या नैपीज का जो ऐड होता है, हमेशा उसमें मां क्यों होती है भाई? क्या वो यूजर नैपी? नो, शी इज द डिसीजन मेकर। रिक्वायरमेंट बच्चे की है, पर जिसने एक्शन लेना है वो मां है, यू नो। कनौर के ऐड, आजकल मुझे एक ऐड बड़ा खूबसूरत लगता है, वो बिल्ली वाला ऐड जो है, यू नो, कनौर नूडल, आजकल वो बिल्ली जो अपनी कम्युनिटी सुनाती है, ब्यूटिफुली डन है, सो इफेक्टिव।
I started eating noodles after 10-15 years. क्यों? अपने सारे टिक मार्क्स वो पूरे करता है, अपनी टारगेट ऑडियंस से भी बात करता है, बच्चे के लिए माँ का कंसर्न है उसकी भूख पूरी हो, वो भी एड्रेस करता है कि बच्चे को टेस्ट पसंद है, अपना लंच बॉक्स फुल करके आता है, ख़त्म करके आता है, ठीक है ना। माँ का कंसर्न भी पूरा कर दिया, बच्चे के लिए टेस्ट भी उसको दे दिया और इंफॉर्मेशन भी पूरी कर दी, ऑल टिक बॉक्स। क्रिएटिव, बिल्ली बातें करी, बिल्ली अपनी दास्तान सुना रही है, हट के है, इनोवेटिव ऐड है, जैसा पिता ये टिक बॉक्स अपने पूरे करते हैं। इट्स अ वेरी गुड ऐड। सो जो इंस्टीट्यूशनल सेल्स ऐसे नहीं होती। मेरा प्रोडक्ट है सॉलिड वेस्ट, क्या मैं 9 बजे की खबरों में सॉलिड वेस्ट का सिमुलेशन का ऐड चलाना शुरू कर दूँ? प्लीज आज आप ये अपनी घर पे जो देखती है इसको सिमुलेट करने में, ये हीट होने के बाद उस पर थर्मल इफेक्ट्स क्या आएंगे, you will be a damn fool, you know, कि मैं अब 3D प्रिंटर का ऐड लगाना शुरू कर दूँ हामिद भी के टॉक शो में। अभी इधर हामिद भी लड़ रहा है, दो को आपस में वो झुकते उगते लगा रहे हैं और बीच में एक 3D प्रिंटर का ऐड लगा रहे हैं। कैसे लगेगा? आप अपने घर में पंखा खुद बनाएंगे, बिजली का स्विच टूट गया हुआ मिल रहा नहीं है, आप बस का कैड मॉडल डाउनलोड करके स्विच आप घर में प्रिंट करें। Can you imagine an ad like this? You know, it's not like that. क्यों? आपका जो इंस्टीट्यूशन के जो परचेज डिसीजन है ना, उसने दुकान से जाके आपने 3D प्रिंटर नहीं खरीदना दिल्ली के कोने से। It's a different set. You have to look at the institution purchase process. अच्छा, this is sales forecasting. Please इसको बाद में देखिएगा, डिटेल में देखिएगा. Customer support, operations and other functions which we have got IT function, we have got legal function, very important. Please, contract draft करने से पहले legal opinions लें. फजीलत, बाइकों के कॉन्ट्रैक्ट में एक लफ्ज ऐड होने की वजह से हमारे आज के दिन कितने पैसे फंसे हुए हैं एक साल से? 1.5 कितने? 1.5 करोड़। फॉर कितने दिनों से? 1 साल से ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें बाइकों के अप्रूवल था। We did a project of digitalization of an oil refinery. We were partner in the project. We were hired by a British company represented by a Dubai company who was the actual software provider, Aviva, and we were supposed to give them the kickstart, the actual scan data in the model. और हमने हमारा client actual बाइको नहीं थी, the time when the contract was between us and Aviva's representative, a Dubai-based company. We negotiated thoroughly. The पैसे मुझे 60 दिन के अंदर चाहिए. उसने कहा okay, 60 दिन में चाहिए, 60 दिन में मिलेंगे, within 60 दिन. And they added chupke se a word with it. Payments will be made within 60 days after the invoice and after BICO's approved. हम खुश हो गए, 60 दिन की बात थी, मान के 60 दिन की BICO क्यों नहीं लेगा? We never knew. We started the project. स्कैनिंग कर दी, 6 महीने की स्कैनिंग, 2 स्कैनर खराब हुए, $30,000 का स्कैनर्स का बिल ठुका, डैमेज. इवेंचुअली फिर भी काम कंप्लीट किया, वंडरफुली डन. 7.5 टेराबाइट्स का डेटा ऑफ अ सिंगल सेल. अब्दुल्ला, ये डेटा बड़ा होता है नहीं होता? कितना बड़ा होता है? एक नॉर्मल पीसी सिस्टम इसको उठा नहीं पाता, ना कॉपी कर पाता है, ना ओपन कर पाता. यू नीड टू हैव अ वेरी स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम. बड़ा डेटा, डेडिकेशन से काम किया, मेटिकुलसली काम किया. Everything technically, इतना खूबसूरत डेटा, इतना डिटेल्ड डेटा. We scanned 7,600 position in that refinery. यानी कि इस पुलिस को 1 इंच के पाइप से लेके पूरी जो एक फर्नेस होती है उसको कवर किया इसमें. 7,500 individual points. The scanner was placed at 7,500 individual points to cover the whole street. डेली डॉक्यूमेंटेशन. 5 लोग दफ्तर में बैठे, डाटा आ रहा है डेली, 5-10 GB का 6 महीने का डाटा आ रहा है, कराची से इस्लामाबाद आ रहा है, उसकी डाटा स्टिचिंग कर रहे हैं, मर्जिंग कर रहे हैं, रिपोर्टिंग हो रही है, टेस्टिंग हो रही है, कंसल्टेंट आ रहा है. इवेंचुअली क्या हुआ?
we missed out on a point. BICO is a serial defaulter. They have crooks. उसने जिंदगी में किसी के पैसे नहीं दिए दिए. Starting from the person, the shipping company जिसने इसकी BICO जब स्टार्ट हुई थी, जिसने इसकी शिपमेंट यूके से और अमेरिका से एक सेकेंड हैंड ऑयल रिफाइनरीज पाकिस्तान लाके हुई थी, इसने उसको भी रुलाया था पैसे देने में. And we didn't know about that. Descom, the biggest engineering company in Pakistan, service provider, has blacklisted BICO. We are not going to work with them. We didn't know about that. And we missed out on that point कि भाई ये जो BICO के पेमेंट से why I am so tagged with BICO, आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ है, once I've delivered my goods you are going to pay to me, मेरा BICO से लेना देना क्या है. लीगल टर्म गलत इंटरप्रिटेशन में एक लाइन, इवन दैट इज अ डिफेंडेबल क्लॉज, ऐसा नहीं कि इट इज नॉट डिफेंडेबल, बट उन्होंने इसको एक्सप्लॉइट किया हमारे केस. BICO didn't open the LCs, बहाने ये वो फलाना ढमकाना. Eventually BICO ने अपना नाम चेंज करके the biggest oil refinery in Pakistan, 1,55,000 barrels per day, उसने अपना बिजनेस नाम चेंज कर दिया. That is Synergy now. The contract was, DAI's contract was with BICO, वो है ही. You know, this happens. ऐसी गलतियां होती हैं. Legal section is the one to take care of such things. Lawyer के, even I am going to request my guidance, Saad Ahmed Khan sir, this is a very, very important thing. He's hired a legal service and advisor for startups here. Once they are entering into a contract with a company or with someone, at least someone should be there to vet their contract terms. कि ये इसको कोई उड़ा के ना ले या ऐसा डैमेज ना कर दे कि सही तमाम मिले. You know, very, very important. अच्छा, R&D भी होती है. There's R&D department, there's production department, distribution, ये सब हैं. अब last but not least was how to develop the system, processes and SOPs. Systems are driven by the strategies. मेरी CAD सॉफ्टवेयर की बेचने की स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है? Though we try to develop future customers through education institutes. हम $1 लाख का कमर्शियल लाइसेंस का सॉफ्टवेयर $100 का यूनिवर्सिटीज को बेचते हैं. The work of the modules which is included in SolidWorks एजुकेशन लाइसेंस, उनकी कमर्शियल वैल्यू जो है ना, एक अगर आप सारे मॉड्यूल्स को ऐड करें, कितने मॉड्यूल हैं? 23. सो अगर हम 23 या कमर्शियल एक मॉड्यूल की प्राइस करें तो दैट इज मोर देन $100,000 एंड दे ऑफर इट फॉर $100 फॉर एजुकेशन कस्टमर्स. क्यों? वो आपका फ्यूचर यूजर है. वंस दे एंटर इनटू द मार्केट दे आर इवेंचुअल बायर्स. आज 100 का दो, 5 साल बाद वो आपसे $10,000 का खरीदेगा. He'll make his company to buy the same software which he's doing. This is a marketing strategy. You know, अब ये जो strategy है ना, this will determine the system. यार अब मैंने अपना marketing system develop करना है, मैं कैसे? ये system जो है ना, it's a collection of 3 things. और system will determine the processes and processes will define the SOPs. Policies are simply the guidelines, the principles your company is based on. What are the do's, what are the don'ts? I will not deliver anything to you until and unless we have something in advance of us. We will not bribe someone. It's not about us. We will do this much, 2% of charity of our revenues every year. We donate 2%. Some sort of a policy, these are the principles by which you develop and you define yourself. ठीक है? अच्छा, do's and don'ts होते हैं business. Now, system of your business, the system consists of processes, policies, procedures and people. ये main elements होते हैं आपके एक system में. अच्छा, इसको मैं for the timing skip कर रहा हूँ. एक practical example अपनी ही company में से डिजाइन प्रोसेस की मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एंड इट विल डेफिनेटली मेक सेंस टू यू.
एंड प्रोसेस की। सो मैं सिस्टम और प्रोसेस को आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। So we are talking about a product development process for aircraft industry. So where do we start from? We start from the first step is requirement gathering. Now आप किसी भी इंडस्ट्री के लिए सर्व कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हैं, just imagine your own industry. It is actually the same. ठीक है? The process starts from requirement gathering from different sources. प्राइमरी सोर्सेज है, पब्लिश्ड है, नहीं अवेलेबल है, आपने अभी कस्टमाइज रिसर्च की, लोगों के इंटरव्यूज किए, एंड यू फाइंड। अच्छा, द अदर वे टू स्टार्ट इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद वन ऑफ द वेज टू स्टार्ट और एंटर इनटू द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस इज कि यार ये जो बाहर का जो दवा है ना, दिस इज गुड फॉर मी, आई नीड टू कीप द एक्सटर्नल थिंग सेम, मैं इंटरनली बेसिस पर काम करना है, तो why to reinvent this thing, especially when it comes to an aircraft. Aircraft design is developed over a period of time, years. Wing designs, delta wing का ये काम है. If you require such and such speed and such maneuverability, delta wing is your only option, and so forth and so on. So अब ये ऑलरेडी आपको पता है कि यार ये ऑलरेडी एक स्टैब्लिश डिजाइन है, मैंने इसी के अंदर रहते हुए अपना बाकी काम करना है. So why to design the whole thing from the scratch, like reinventing the wheel? Start with 3D scanning. Reverse करो उसको process. ठीक है? Physical चीज को आपने scan किया and you get a CAD model. Not exactly the CAD model, but an eventual CAD model. ठीक है? This is one of the ways to start. This is either a process. Or if you are coming to a new one, conceptual design is the process number 2. क्या आप पहले दिन ही अपने, अगर मैं एयरक्राफ्ट डिजाइन की बात करूं, तो क्या आप उसका इंजन का, अगर हम उसके जेट इंजन की बात कर रहे हैं, तो क्या आप फर्स्ट डे डिजाइन में आप उसकी जो इंजन की, उसकी टरबाइन की जो फिन्स होती हैं, आप उसकी डायमेंशन, इंजीनियरिंग डायमेंशन एंड डेप्थ्स क्या पहले दिन बना देंगे? नो, बहुत डिटेल का स्टेप है. फर्स्ट यू स्टार्ट विद द conceptual design. ठीक है कि conceptually how your product looks like, look and feel उसकी कैसे होगी. And once you have passed the conceptual designing phase, you go through a virtual prototype. Even this is the same case with car manufacturing. Aerodynamics काम कर रहे नहीं कर रहे कार के, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए इनिशियल लेवल पे इसका आर्किटेक्चर का वो इनपुट जो हम उसको देते हैं, क्या डिजायर्ड आउटपुट देता है कि नहीं देता. सो यू गो थ्रू अ वर्चुअल प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस phase, and once you pass through the virtual prototyping phase, you start to work on detailed drawings which are meant to manufacture, which has got more details, precisions, tolerances, geometrical information. ठीक है? So that is detailed drawing. और इसके बाद then we have to integrate few things like mechanical CAD. A car or an aircraft is not just mechanical designing, it's a combination of so many different engineers: mechanical, aerospace, avionics, electrical, electronics, metallurgy, software, you know. So everyone has to contribute towards it. So one of the possibility is the mechanical design, the other one is electrical designs, things like circuit designing, cable designing, the cabinet designs, things like these. And then we have these things get assembled and you do the simulation, you test if these 1,000 parts, once they're combined together to form up a one single component, will they work, yes or no. And then finally we have before going into the manufacturing, now this is the final stage, which is called analysis. You do the final test. There's so many tests which goes around, you know, on an aircraft before it comes into the real life. It is one of it is called computer analysis. In common terms, we call it simulations, and we have the final product. So
before reaching to this stage, which is the final shape of your product, actually it started from here. So a process of developing an aircraft as a product, aircraft designing process actually starts from requirement gathering and it goes through step A, B, C, D, E, F, G. So कोई भी आपका process क्यों हो, sales process क्यों हो, you just make simple steps and connect those steps, those dots logically with each other. They should talk to each other. This is the process. Okay? Acha. Ab, what is the system? Process to आपने define कर लिया. We have already said system. Keeping track of all the data involved in product development is a very complex endeavor, made even worse by the reality that this data comes from so many sources, from design, engineering and manufacturing, to purchasing, marketing and sales. Each department often has its own set of project management tools, files, images, and needs for dashboards and reports, which just adds to this complexity. If you're in any type of management role, you need constant access to all this information in order to make critical business decisions. To help manage all this data, we're introducing SOLIDWORKS Manage, a new offering that builds upon the capabilities of SOLIDWORKS PDM and adds powerful data management features that enable you to access all this valuable data by consolidating it so that you can make those critical product development decisions quickly and efficiently. Let's take a look at how SOLIDWORKS Manage can help you control. This is something I will share to you. आप लोगों से बाद में connect हो जाना, please मैं आपको उसको दे देता हूँ. Let's just wrap up, or we are ending towards the finish. I've got just two very interesting documents, at least 5-12 minutes each to show it to you. Just please have a look at it. Henry Ford, one of the most influential American industrialists. Through his company, Henry transformed American life, and in this video, we're gonna learn how he did it, starting from the very beginning. This video is brought to you by Audible, and a big part of it is based on Henry Ford's biography, which you can listen to for free on Audible if you register for a free trial with the link in the description. You should also check out Real Engineering's video on the manufacturing innovations of the assembly line, which he explains masterfully on his channel. By all accounts, Henry Ford should have been a farmer. Born in Michigan barely 20 years after it had become a state, Henry grew up at a time when farming was slow, exhausting, and manual, which is why, unsurprisingly, he came to hate it with a passion. But whereas most people at the time didn't have the fortune to escape what they were born into, Henry was lucky enough to get such an opportunity. You see, the village he was born into was just 8 miles west of Detroit, which was rapidly becoming an industrial center thanks to the steam engine. Early on in his childhood, Henry encountered technology which few children his age could play around with. He'd tinker with the watches of his better-off neighbors, and by the time he was 12, he could not just take them apart, but also put them back together and repair them. His interest grew into an obsession when he got to observe a working steam engine firsthand while on a school trip to one of the rail companies in Detroit. By the time Henry had become a teenager, the steam engine was already making its way into the farming community. Coal-powered threshing machines and sawmills were becoming common sight, and Henry was learning how they worked and how to fix them. At the age of 16, he made a big leap forward when, against his father's wishes, he left his village to go work in Detroit, where any young mechanic could easily find very lucrative employment. Industry in Detroit was booming, and it had been doing so for close to 5 decades. In 1825, a canal had been dug connecting the Hudson River to the Great Lakes, which at the time were effectively the western frontier. All the untapped resources that had no way of getting out could suddenly be moved by steamboat to New York, and in the span of just 50 years, Detroit's population increased by a factor of 10, with vast mines in the north producing copper and iron, and lumber mills opening up virtually everywhere. All this metal and wood sustained close to 1,000 companies in Detroit alone, including the ones in which Henry would work at over the course of the 1880s. It is during this time that Henry, by chance, learned about the gas engine from a British magazine. It was being produced in small numbers by a German engineer,
Nicholas Otto, and it was gaining some traction in Europe, but it was practically unheard of in America. Henry would get the chance to work on such an engine himself in 1889, and he instantly recognized the advantages it had. Because it did not use steam, the engine was much lighter, and got rid of the heavy boiler and all the water in it because it did all the combustion internally, a much more efficient process. This also allowed the gas engine to start quickly, whereas steam engines of the time needed as much as 30 minutes to heat up the water and generate enough steam to start working. The gas engine was an innovation Henry fell in love with, but it was also one he didn't fully understand. After all, he had extensive experience with steam and metal, but almost none with electricity, and the gas engine was fired by an electric spark. To obtain this missing knowledge, Henry went to work for the local branch of the Edison Illuminating Company. It was generating electricity for over 1,000 homes in Detroit, and it was doing so by using steam engines, so Henry was a natural hire for them. Whenever the engines broke, Henry had to fix them, but whenever they were working, he was free to do as he wished. It was the perfect job that allowed him to spend his days experimenting with gas engines. In 1893, when Henry had already been promoted to chief engineer at Edison, he created his first working gas engine. The idea of using the gas engine to create a horseless carriage had been around in Henry's mind since he first laid eyes on one, but actually making that idea a reality would take years of work. Building a car in a world with no car parts wasn't easy, and Henry had to figure out every detail through trial and error. It took him 3 years of constant effort to produce this, the quadricycle, a simple frame with an engine powered by ethanol and 4 bicycle wheels mounted onto it. It had only 2 gears, and neither one was for going in reverse, but what's worse is that it had no cooling system to speak of, thus making overheating a constant issue. In its first year, Henry made numerous improvements to the quadricycle, most notably adding a cooling system, and by the time he sold it in 1897 for $200, he had driven 1,000 miles in it. Henry built a second quadricycle and then a third one, always improving the design, before finally feeling confident enough in 1899 to start his own company. Capitalized at $150,000, the Detroit Automobile Company was a very ambitious venture. Many of the Detroit elite invested in it, including Henry's friends from the Edison Company, and everyone was eager to see what Henry could create with proper capital. Henry's plan was very clever. Since he personally knew many of the industrialists in Detroit by that point, he'd try to build an automobile they could use in their businesses. He leased a factory and planned to hire 100 workers to make his new delivery wagon, as he called it. But it turned out that building such complex machines in high numbers was much more difficult than Henry imagined. The vast majority of the parts used in the making of the delivery wagon were produced by other companies, and every time a single delivery was late, the entire factory would have no choice but to stop working. The first delivery wagon took 6 months to produce, and no more than 20 were made in the first 2 years of the company's existence. By the end of 1902, the other shareholders were sick of Henry's lack of progress and actually voted to get rid of him. Now, because Henry held only 15% of the company, he had no choice but to comply. And interestingly enough, the man who took over the Detroit Automobile Company would eventually transform it into Cadillac. But that's a story for a different time. What matters is that Henry was pushed out of his own company and had only $1,000 to his name. It was back to the drawing board, and this time Henry would take a very different approach. Instead of targeting businesses with expensive machines, Henry would design a vehicle to be used by the average man. You see, at the time, virtually all cars were high-ticket items. They were mostly made by skilled craftsmen, one at a time, and more often than not were designed for racing, which was rapidly becoming a favorite American activity. Henry envisioned turning the car from a status symbol into a commodity, but doing that would not be easy, and in fact, it took Henry 20 different design iterations before he finally got one that worked. Henry labeled his first design as the Model A and worked his way through the alphabet over the next 5 years, sustained by capital from his friends and family. But what changed the most during this time is not the car itself, but the production process.
Henry learned the importance of having a reliable supply chain when his first company failed, which is why this time around he tried getting as many parts as possible from the same manufacturer. The one he chose will probably sound familiar: the Dodge Brothers Company, a machine shop in Detroit that would eventually evolve into the eponymous American brand. The biggest game changer of all, however, was Henry's chance visit to a slaughterhouse in Chicago. He saw there something interesting: a disassembly line, so to speak, where multiple workers would process carcasses moving down a line. Henry figured he could use the same process but in reverse, an assembly line. Using the money he had saved from some of his earlier models, which were also assembled by the Dodge Brothers, Henry was able to build a factory of his own in 1904, where he could experiment with the assembly line process. By 1905, the Ford factory employed over 300 people that built 25 cars a day, but Henry still hadn't figured everything out. He was producing multiple different models at the same time, which prevented him from properly using an assembly line. Nevertheless, there was a sign of things to come. The affordable Model N, created in 1906, became the best-selling car in the US, and Ford became the biggest car producer in America. It is actually during the production of this model that Henry would first use the assembly line process to at least partially assemble some of his cars. It wasn't a full moving assembly line, but nevertheless, this experiment increased production by a factor of 5 in the same factory. Logistics, of course, was another big part of Henry's success. In 1905, he created the Ford Manufacturing Company, complete with its own factory, to start making the engines and transmissions of Henry's cars to further eliminate any possibility of delays. But the biggest factor in Henry's success came from perhaps the most unexpected place: Peru. Now, this is a story you're not gonna hear anywhere else, so listen carefully. In 1907, Henry began construction of a heat treatment plant to produce vanadium steel. This alloy was new to America. In fact, few furnaces in the US could even reach the temperature needed to manufacture it. The difficulty in producing it, however, was worth it, because vanadium steel... Sir, so now time थोड़ा सा हमारा mismanage हो गया. I would have shown you another case study, but please go. It's there on YouTube. Failure of A380. It's a very interesting case study कि एक business decision ने एक बेहतरीन product, engineering marvelous product को क्यों production से out कर दिया. A380. Henry Ford की जो example की मैं इस point पे आपको conclude कर रहा हूँ. The assembly line concept which he introduced, इसकी inspiration इसको कहाँ से मिली? Butchery, slaughterhouse से, और उसका भी reverse process, you know, exactly reverse process. Disassembling unit है, जो butchery है. He had to create the, see, एक process में इसको कहाँ से कहाँ Ford company को देना पहुँचा. The success factor was a reinventing the process, not just the car design. And there are other factors. So please, ये success stories को देखिए. This is और जो assembly line concept Henry Ford ने आज से 120 something years पहले दिया था, वो आज भी valid है. दुनिया की हर आज modern car manufacturing, motorcycle manufacturing assembly lines पे ही manufacture होती हैं. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आज भी उसी कॉन्सेप्ट को ही फॉलो कर रही है. एंड टाइम होता तो मैं आपको एक और प्रोडक्ट दिखाता कि इत्तेफाकन वी हैव गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट विच इज वेरी क्लोज टू दिस थिंग इज कि अब जो डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग है, हाउ टू सिमुलेट दिस एनवायरनमेंट डिजिटली, कि आपकी असेंबली कैसे होगी. तो देयर इज अ प्रोडक्ट कॉल्ड डेलमी एंड वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट टू पाकिस्तान. That's also from the same company which we work with. Delmia. Please कभी जाके उसको YouTube पे search. It's a wonderful. So how to create a digital factory before you actually do. तो ये assembly line concept 120 years पहले जो एक बंदे को एक unusual सी जगह से मिला, तो आज भी exist करता है. So on this note, I will just conclude. Thank you very much for being very, very, very patient. I know it's been a bit tough,
to sit for almost 3.5 hours in Rosa. If you have any questions, I still have the energy to answer them, and हम बाद में भी चलो करेंगे. I hope your time was not wasted and we have all learned something. Thank you very much. Any questions? Please. How important is word of mouth and reviews in a product? And product itself, how important it is? Because How important is, sorry? जिस तरह आपने एप्पल की बात की और बाकी डिफरेंट मोबाइल कंपनीज की बात की, so a lot of companies started when Apple started mobile actually, but the software and the product, it was so good that no other companies could have competed. Apple की बात करें. Apple, like Nokia ने उसके अगेंस्ट अपना Symbian शुरू किया, but they couldn't survive. But Apple ने, Google ने, Android ने दिया, 99% of the companies went to Android system. Only Apple was the only system जिसने अपना system survive किया. एक और भी हुआ है बड़ा इंटरेस्टिंग, वो भी आपको पता है. You are missing on that. There was another player on OS. Microsoft. और जिसने Microsoft लिया उसके साथ क्या हुआ? कौन? Nokia. ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प टग ऑफ वॉर थी. आई एम सॉरी, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैंने लिखा था कहीं पे और मैं वो मिस आउट कर दिया उसमें. इट वॉज पार्ट ऑफ, आपके कई स्लाइड्स में किसी जगह पे देखा होगा कि आपके अंदर एक टेक्नोलॉजिकल जो शिफ्ट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आ रहे होते हैं ना ग्लोबल लेवल पे, दे आर थ्रेटनिंग फॉर सम and they also present a lot of opportunities for the. I missed out on this point. I was supposed to cover. Q. If you look at the global economy in last 50 years, what was the main source of global economy? Drivers क्या थे? Economy के drivers क्या थे? One of them was petrol, because the biggest source of energy was hydrocarbon. Number one. So the one who controlled hydrocarbon and energy lines, उतना ही पैसा. Saudi Arab, just before discovering oil and having so much commercialization and industrial uses of oil in the world, what was Saudi Arabia? It was nothing. It was just a piece of desert. Karachi had subcontinents. Karachi had the first airport in the subcontinent. Dick Road, sir. It was the commercial hub of the whole thing. It had trams, it had trains. What Jeddah had, what Dubai had, what Riyadh had, donkeys. Even the king of Saudi Arabia, Mr. Abdul Aziz, वो किंग बनने के बाद भी पता नहीं कितने साल बाद उसने पहली दफा गाड़ी के अंदर पाँव रखा था. He'd never seen a car, he'd never seen a tram. ठीक है. अब ये ग्लोबली ना एक इंडस्ट्रियल शिफ्ट्स आते हैं. कार मैन्युफैक्चरिंग आया, एंटरटेनमेंट आया, कम्युनिकेशन शिफ्ट आए, लोगों की स्पेंडिंग पैटर्न जो है ना वो उस तरफ हो गए. ये जो स्मार्टफोन ने जो टेलीकॉम रेवोल्यूशन जो लेके आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट था जिसने बहुत सारी कंपनीज को एक बहुत बड़ी मेगा लेवल अपॉर्चुनिटीज दी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ्स की अपॉर्चुनिटी दी, लाइक सैमसंग, Apple and others, but at the same time बहुत सारों को बिजनेस भी खत्म भी कर दिया. Do we use cameras anymore? Films खत्म. Fax use करते हैं खत्म. क्या कहते हैं उसका, लोगों ने घड़ियां पहनना खत्म कर दी हैं. So many other gadgets have been replaced by a smartphone. अब what was the difference? This was a tug of war. अपना OS बना ले या ओपन सोर्स को बना के आपके अलावा भी जितने बड़े हैं उन सबको भी उस प्लेटफॉर्म के लिए. गूगल हैड आल्सो अ चॉइस, मैं हार्डवेयर बना लेता हूँ. दे डिडंट गो फॉर हार्डवेयर, दे वेंट फॉर बट समथिंग एल्स. सॉफ्टवेयर तो बना के ओपन सोर्स छोड़ दिया उसने. एक चीज उसने अपने पास रखी, वो क्या थी? यस,
They knew कि नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ाओ, ओएस को ओपन करो सबके लिए, प्ले स्टोर जहां से आप डाउनलोड होनी है, कीप दैट रेवेन्यू टू योरसेल्फ, एंड दैट्स इट व्हाट इट इज। एप्पल की जो खासियत थी वो उसका डिजाइन था। दे हैड द फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज, नॉट एक्चुअली द फर्स्ट मूवर, दे रीडिजाइन द होल कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्मार्टफोन। इसने अपने दो प्रोडक्ट्स को ऑब्सोलीट किए। एप्पल का प्रीडेसेसर जो था वो था मिनी पॉड्स, उनके म्यूजिक गैजेट्स। उसने वो फंक्शनैलिटी और एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, मोबाइल डाटा कैप्चरिंग एंड कम्युनिकेशन एंड अ मिनी लैपटॉप फंक्शनैलिटी केम इनटू वन सिंपल फोन। एप्पल वाज द फर्स्ट फोन इन द मार्केट जिसमें कोई बटन ही नहीं था। तो इतना बड़ा सर्फेस एरिया लोगों को मिला प्ले अराउंड करने का, टाइप करने का, यूजिंग देयर फिंगर्स। So this was the change, and their operating system, उनकी जो मार्केट जो थी नीश, जो एप्पल यूजर मार्केट, उन्होंने कहा नो, वी आर नॉट गोइंग फॉर द मास, वी आर गोइंग फॉर द 10% ऑफ द कस्टमर्स हु कैन पे अ प्रीमियम प्राइस, 90% बाकी लोगों की। जी, एप्पल की स्ट्रेटेजी आज भी हुई, प्रीमियम सेगमेंट को पकड़ो, जिसने पहला रिलीज आज के दिन ही लेना है, जिसने $1000 की चीज़ $1500, $2000, $3000 में वो खरीद सकता है। मेरी तरह आपकी तरह नहीं कि यार अभी वेट करते हैं जब पैसे कम होंगे 6 महीने बाद ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो दिस इज अच्छा, ये जो अपॉर्चुनिटीज होती है ना, ये ग्लोबल लेवल पे डिफरेंट क्रिएट कर देती है। वी हैव बीन इन पाकिस्तान, वी हैव बीन मिसिंग ऑन ऑल ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज विच वर देयर। आने वाली क्या अपॉर्चुनिटीज है? AI, cyber security, Internet of Things, additive manufacturing, upcoming revolution है ना। Please, if you haven't studied Industry 4.0 or the fourth industrial revolution, please follow this concept, and this is coming. This is coming. आ चुका। मैंने आज एक आखिरी बड़ी दिलचस्प चीज आप लोगों के लिए शो को एंड करने के लिए रखी थी, बट वी वोंट बी एबल टू डू दैट। जरा स्किप करो जल्दी से, सिर्फ दिखा देते हैं। The largest commercial. मैं आपको ये 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, जस्ट टेक अ स्नैपशॉट। अपने अपने चैट जीपीटी पे जाएं और इन तीनों क्वेश्चंस को प्लीज कॉपी एंड पेस्ट इनटू योर चैट जीपीटी एंड सी व्हाट चैट जीपीटी हैज टू से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ स्टडिंग हिस्ट्री विद ऑब्जेक्टिविटी एंड ऑथेंटिसिटी helps an entrepreneur to understand politics? Number 1. The second question, just copy and paste. What is the relation between politics and economy? And the third question is, why do an entrepreneur needs to understand economics for business decision making? We ran out of time, otherwise the idea was we would live run these questions and read out the answer from ChatGPT, what ChatGPT has to say about it. We already have these answers, but now you just, it's a newfound love for me, ChatGPT. इससे complex question मैं इससे नहीं पूछ सकता, and how beautifully they have explained my mind. That's it. Thank you very much. Sir Ahmed, please. Thank you very much, Saad Ahmed, for considering our request for conducting this wonderful workshop. We are so grateful. There is one suggestion that probably for those aspects which were left behind, we can have another planned session also. If not before Eid, maybe after Eid also. So once again, thanks a lot. It was very absorbing for us, and we'll try to deliberate with the new startups, and we'll inshallah get back to you. Thank you, Ji, once again. Assalamu alaikum.
Thank you.